बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। After a long time, I am going to do this live amazing update session. As we all know, yesterday we have seen amazing webinar session. It was 4 hours long session, and amazing updates we got in that session. Today's session I will do in Urdu, and will explain Ash what Ash said. But we have some international guest. I'll reveal you very soon, and then we'll talk in English and discuss about the Ash updates. तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। और आज काफ़ी अरसे के बाद हम एक ऑन पैसिव का एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं, और मेरे साथ कुछ देर बाद आयशा आसिम मुझे ज्वाइन करेंगी और और अपडेट का हिस्सा बनेंगी। लेकिन हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल गेस्ट भी हैं जो कि सरप्राइज गेस्ट हैं, और हम उसको जैसे ही वो आएंगे तो हम उनको सामने स्क्रीन पे शेयर करेंगे, उनसे उनसे अपडेट्स भी लेंगे इंग्लिश में। सो दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो मैं स्टार्ट करता हूँ कि कल का जो सेशन था, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐश सर काफ़ी दिनों से नहीं सामने आ रहे थे, बट ये सेशन जब वो आए तो उन्होंने तमाम जो जितने भी लोगों के दिलों में डाउट्स थे, जो सवाल थे, उनका जवाब दे दिया, जो कि बहुत अच्छा था। और उन्होंने रीज़न भी बताई कि क्या वजूहात थी कि किस वजह से वो नहीं कर सके। उन्होंने एससीसी के बारे में क्लैरिटी दी, उन्होंने एफिलिएट कमीशन की बात की, उन्होंने जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़, जो सबका एम्प्लॉयज़ जिनको टर्मिनेट किया गया या जो जो चले गए, या हेटर्स के बारे में बात की। तो उन्होंने बहुत खुल कर बात की, और जो कि बहुत अच्छा लगा, और हमें एक पॉजिटिव उसमें वाइब्स नज़र आई। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम पाकिस्तान से तो हम हमेशा हमने ऐश के साथ हमें स्टैंड किया है और उनका साथ दिया है, उन पर बिलीव किया है। बीच में कुछ हर्डल्स आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, बट हम उन पर हम उसकी उसकी वजह से हम नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव होगा वही यहाँ पे सर्वाइव करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपडेट से। तो क्रिस जॉनसन सर ने स्टार्ट किया था अपडेट्स को, और उन्होंने ज़्यादा देर टाइम नहीं लिया और ऐश को इनवाइट किया। तो ऐश ने जब बात की, ऐश ने कहा काफ़ी अर्से के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, और बैक एंड पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। और उन्होंने कहा कुछ अरसे से कुछ महीने से मैंने अनथक मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत की है। और उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो कि यूट्यूब चैनल में ऐश को वॉच कर रहे थे, उनका जो बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे उनका भी शुक्रिया। और उन्होंने कहा उनके पास चॉइस थी कि वो मेरा यूट्यूब देख भी सकते हैं, साथ कोई और काम भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे देखना सेलेक्ट किया, तो उनका शुक्रिया। तो ये तो जैसे कि आपको बताया कि ऐसे बहुत यानी खुले दिल की हैं, ओपन हार्टेड हैं, और हमेशा वो फ्रेंडली और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि तो यहाँ पर मौजूद तमाम भाई बहन, उनका शुक्रिया जो कि वहाँ पैनल में मौजूद थे। और उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पर हम सब एक बिज़नेस से ज़्यादा हम एक फैमिली की तरह हैं, और हमारा मकसद बहुत बड़ा है, जो कि हम अक्सर बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो मकसद हमें तरगीब देता है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ। और उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे पूरा यकीन है, मैं यहाँ पर एक अच्छी तब्दीली के लिए इस दुनिया में आया हूँ, और जो कि मुझे विरसे में लोगों को देना है, और दुनिया को चेंज करना है। तो उन्होंने फिर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, हम क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि हम सुनना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक एक बात उन्होंने ये की थी कि पहले तो हम एससीसी की बारे में बात करेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल के बारे में, और उसके बाद ऑफिस ग्लोबल जो अब्रॉड में ऑफिस लोकेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन सी लोकेशंस काम कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही हैं। और जो साबका एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर्मर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एफिलिएट कमीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कंपनी कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन था जो एंड में कुछ ग्रेट लीडर्स थे जो कि वहाँ पे इनवाइट किए गए थे, उनके साथ था। फिर उन्होंने कहा हम वेबिनार शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। और ये सारी बातें उन्होंने की। तो इसमें एक बात जो उन्होंने की,
उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक अच्छा होना ही काफ़ी है, बट हमारा जो कंपास जो है वो हम पर वाजे करता है हम कहाँ पर खड़े हैं। यानी कोई ऐसा नहीं, हम ट्रांसपेरेंट हैं, हमें कोई ऐसा नहीं है चीज़ है कि हम कहीं गायब हो गए या हम उन्होंने वाजे तौर पर कहा था कि माय नेम इज़ आयशा फारे, आई एम हियर इन डिज्नीलैंड। तो एक ट्रांसपेरेंसी थी कि इतना कुछ होने के बावजूद वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ इस लोकेशन पर मौजूद हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि जो कि बहुत अच्छी बात थी। और उन्होंने जो टॉपिक्स मैंने बताया, जैसे कि उन्होंने बताया एससीसी के बारे में कहा था, ऑफिस एजुकेशन के बारे में कहा था, और एम्प्लॉयज़ के बारे में, एफिलिएट कमीशन के बारे में कहा था। फिर उन्होंने कहा कि ये एक जनरल थॉट के बारे में बात की थी कि हम एक जहाँ पर ही हम मुस्तकबिल में आप हमारे साथ हों या ना हों, आप कहीं भी होंगे, आपकी मर्ज़ी है। ये दिस इज़ चॉइस ऑफ जनरेशन, ये आपकी चॉइस है। और और ये कहते उन्होंने कहा कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, और मैं कसम नहीं खाता आपको कि मैं मिलना ही मिलना है, और हमारे साथ रहोगे तो वो ज़िंदा रहोगे, वरना मर जाओगे, ऐसी बात भी नहीं करूँगा। और ना हमारे पास कोई मोजज़ाती इलाज है जिस पर हम बात करेंगे। तो आप बिज़नेस की मुश्किलात जानते हैं या नहीं, कि हम सिर्फ़ एक हैं। उन्होंने कहा एक, और हम एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, इसलिए हम अभी तक हम इकट्ठे हैं, यूनाइट हैं, इकट्ठे हैं। क्योंकि नॉर्मली जो बिज़नेस होते हैं उनमें लोग गायब हो जाते हैं, और कुछ अर्से बाद उनका आपस में कहते हैं ना, यूनिटी नहीं होती, आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, और सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ से बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। ठीक है। और फिर उन्होंने एक बात की कि हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया कम से कम लागत से, यानी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो और लोगों के लिए बेनिफिट हो, और ये एक कारोबार से ज़्यादा है, यानी एक बिज़नेस नहीं है, इससे ज़्यादा बिज़नेस है। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कोई हमने 30,000 अटेम्प्ट नहीं की बिज़नेस के लिए, ना 3,000 अटेम्प्ट की, हमारी पहली अटेम्प्ट ना हो, दूसरी या तीसरी होगी। फिर उन्होंने थॉमस एडिसन जिसने बल्ब ईजाद किया था उसकी मिसाल दी, एग्जांपल दी कि जो थॉमस एडिसन था, तो वी हैव सम रिस्पेक्टेबल गेट्स, आई एम गोइंग टू इनवाइट यू एज सून। सो तुम बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अच्छी चीज़ें जो वक्त और कुर्बानी मांगती हैं। ठीक है। और और फिर उन्होंने जो एससीसी के बारे में जो दूसरी वजीर अपडेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। बट मैं इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं जो कि आ चुके हैं, मिस्टर मार्टी डिगर्मो सर। हेलो सर। अस्सलाम Hello, वालेकुम। hello. Yeah, how are you? आई एम गुड Where'd you सर। where'd you get this आई एम गुड, from? आई एम लुकिंग गुड, आई एम Do फॉलोइंग you? यू। Oh no, yours is better than mine, really. So good to see you after a long time. It was amazing update yesterday. I was missing that panel, so I hope in coming week I'll there You're in. on you're on the list, okay? Thank you very much. Thank you very You're much. welcome. So before I start conversation with you, I have some other guests with me, Mr. Colin Mana from Tech Pro. Hello, Colin sir. How are Oh you? my gosh, he follows me everywhere. What the Yes, heck? I follow Madi. I'm good, Wasim. Good to see my brother Madi Digamo. We are so pleased to be here. It's really Huh? a great place to be after a Yeah, long maybe. time. It's on that. Yes, yes. After a long time, and Mr. Colin Manna, sir, I think you didn't join me in my previous webinar. My 14th August Independence Days are coming soon. So I think my every webinar, Mr. Marty DeGarmo joined that session. So I hope in that coming webinar, Tech Pro will come. So, Marty, sir, Yes, sir. yes, sir. So, what you have feeling, what you want to say about previous yesterday webinar? We are very excited, very positive, very detailed webinar, I think. So, before you start this talk, one more guest has joined. So, Comfort here from UK. So, hello, ma'am. How are you? I'm fine. Hello, Wasim. Hello. Thank you My very bro much. my brothers and sisters follow me everywhere. Yes, I know. yes, yes. so, so we are very excited
Actually, I don't do normally webinar without any updates. So after a long time, I am doing this live session. So I am very excited. So, Matthew sir, please, what you want to say regarding yesterday Ash webinar? Well, anybody that didn't watch it, first thing, make sure you watch it, okay? Because I won't be able to do justice, but I will try. Mr. Mufara proved yesterday, which he didn't need to prove, but if you need proof, yesterday he gave it. He's unbelievable human being. He is looking out for all of us. He's not a quitter, that's for sure. Uh, Anybody else that I know of would have threw in the towel and just said, I'm done. Obviously, bad things happen, but bad things happen to good people. That's just fact. This company is going to be something that's never been done before. It's going to take people that have years and years and different ancestors living in poverty, thousands, hundreds of years, thousands of years. I believe for the first time, uh, Pakistan has a ray of hope. Obviously, it's not going to be taken care of by our governments. I'm not putting governments down. I'm just saying it's not going to happen. I have been doing country by country on my lives, and I'm learning more and more. The money is there, but the people that need it aren't getting it. It's numbers don't lie. And Ash made developed a company, put this company together, and he had a lot of bad things happen. But if you look back in history, anything that was really big and worth that we can even remember, even now, hundreds of years later, every one of those went through some kind of turmoil. I mean, I'm going to use an example. It takes time, right? If you go back when in the Bible where it says Moses took the people out of Egypt, 40 years they walked around in circles. But if you do the calculation, it's an 11-day trip. If they went straight, it's only 11 days. That's a long time to walk. But for people that are used to walking, 11's a heck of a lot better than 40 years. Why did that happen? From what I read, there were people in that group that weren't worthy of going to the promised land. God saw it when Moses had gone up. While he's talking to him, he said, "Go back down." They're acting, they're acting crazy. I'm going to give you in my version Bible, okay? They're acting crazy. And he saw it. He went down and they built a calf. They're worshiping something else. But the point is, you have to get rid of the weeds. One of the worst years in Ash's life happened last year because it was personal, it was financial. Uh, I mean, I know for a fact Ash probably worked 18 to 20 hours a day for 6 years straight, 7 days a week. I don't know how many millions of dollars he spent. And he built relationships. He surrounded himself with people and he treated them like family. Some of the very people, no names were mentioned, but some of the very people that he uplifted financially, their way of life, positions they would have never gotten, are the very ones that betrayed him. And you can look back in history, that happened too. But the outcome is, and he said this yesterday, he said it to me before, because I was blown away when I started to hear what was going on. He said, thank God.
thank God all those bad things happened. He said, because now it's clear. What would have happened if you brought some of these bad apples and they went with us to the next step? And one day the company's worth $500 billion. Would have been a different story. Because in their heart, it was who they are. But what brought it out was greed, probably money. Better to get rid of it now. And that's what he said. And also, when that happened and that door closed and he was beat up and knocked to the ground, when he got up, because God is involved, he sees a bigger and a brighter future for all of us. He said, I don't want to talk too much. I want to talk and say stuff when they happen. He's not going to telegram or tell you what's going to happen coming soon, because that didn't work. People twist it around, they lie about it, whatever. But he said, you will be impressed. He has surrounded himself with people that make him have a headache. And that's a good thing. They make him go, wow, it is possible. And why did he do it? Because his ambition is, when I first met him, I said, what do you do on your days off? So I don't have days off, but yesterday I had 4 hours and I went out and got food and water and we gave it to the poor. This is what he did on his day off. In fact, he has his children involved. The little boys run up and give him a bag with some water and food. And he thought in his life, how much can one person do? Not too much. Mother Teresa was amazing. She did a lot of things, but she could only do so much, one person. Asha's concept, what happened? What if I throw my heart out into the world and it pulls in hearts from other people, like yourself, like Comfort, like Collins? What would happen? I believe automatically, after they fill their pockets, their cabinet, maybe change their address, maybe become debt-free, the abundance, what they have left, automatically, because you were drawn here by your heart, you're going to give. And you're going to help other people. We're going to uplift humanity. Yesterday he showed, I don't care what happens. I'm not quitting. I believe this whole company was not an accident. I think it was all meant to be. I think you're meant to be here. I think people watching were meant to be here. And I want to tell you, there might be 1 million founders. 5 million people said no, at least, maybe more. Why? They weren't meant to be here. I hear people say, I'm lucky. No, it's not luck. You're here. Now, we're going to open up to the world soon. And our obligation, my opinion, we only have to do 2%. Now we go out and share this business with others. Maybe you go to Pakistan and you start to uplift and you find a young man or a young woman and you say to them, I've got a business here that you don't need special skills. You don't have to be a marketer. You don't have to know coding. I'm going to give this to you. And maybe you even pay for Connect and a couple products. And you give him a business in a box. And he said, oh my God, thank you. So wait, I want something for this. What? I want you to uplift somebody you know. And if you spread that, what does the world look like in 4 or 5 years? It's a different color. You painted a different color. And what he did yesterday is just emphasize and put a stamp on who he really is. One thing, I was with Collins in another webinar just now,
Only thing I emphasize to everyone, and he will too, and so will Comfort, don't share anything that's not true. If someone makes a bad post, if you share it, you're as guilty as the person that made it. Deny it, let it go. If Ash didn't say it, you shouldn't say it. If you're not sure, go watch the video. Don't assume anything. Some people like to blow things up, make them bigger than they are. I saw a picture of a bunch of people that work for Ash, and they're calling them all kinds of names. Ash didn't do that. Ash never mentioned anybody's name. We know something bad happened, but we shouldn't do more, say things that aren't true, because the person that's going to have to answer for that is Ash. And if he has to look at negativity to fix something, it takes him away from the business he's building for us. People need to think. If you're spreading something that doesn't help, stop. Don't do it. Anyway, I'm glad I'm here. Thank you for inviting me. Love Pakistan. Love the people. We're going to do very, very well. I want to give a shout out to Waseem. He's he stayed the course. No, I mean it. You were always here. I never heard a bad word spoken about you. I never got any negative about you. And I always knew Pakistan's okay because of people like you. And I want to thank you for inviting me. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. So actually, it is difficult to my intention is very good. My heart is very big, but I'm actually single person from Pakistan. So I try on my capacity ever. So thank you very much. I remember in previous last year New Year webinar, you said same. It means a lot. You said you never heard a single word, a negative word from about Pakistan. It means a lot. Thank you very much, sir. Sir, can I have a question? People ask me. So. It's up to you if you can give any proper answer. Actually, my English is not good, so very difficult to understand the Ash meeting. So we try to understand. So Ash said about new business idea, the backup plan discuss. So after that, in Hindi, Gusmandar have sent a video voice note about a new business idea. Uh, uh, can we relate that business with on passive, or this business will merge in future? So you want to say something, and will we pay more money in new business? So people are confused. So or we'll hear next week a news about it. So Here's what I want to say. hmm, Whatever happened, it was bad. Where we're hmm, going is going to be better than where we were, ever, ever. How much, when, and what date? I would not believe anything anybody says, including me, if it's more than what was said Thursday. He's going to do this every week. Next week, tell everybody in Pakistan, don't listen to no one. They might interpret. I'm not against Kirschmender, but I would not go by dates. This is what he said. I was in that webinar. I heard what he said. There was no dates given. He just said when things were getting bad, I had a plan B. I've always had a plan B. Now, did he push plan B up quicker because of what happened? My common sense is probably, but I don't want to go there. Listen, if he's going to be here every week we dissect what he said and wait till the next week. Because all said and done, the picture will be clear. When he holds that picture up, you're going to go, wow. Ash is going to pay as much as he legally can and keep the company running. How do I know that? It's Ash Mufarah. I don't need to hear the specifics. That's who he is.
I asked him, no, I didn't ask him. Bob Takusi asked him one day. Collins was there. He said, everybody having their dreams come true and think bigger and dream bigger. What about you, Ash? What is your wants and needs and dreams? And he didn't say anything for like 30 seconds, right, Collins? He just stared. You know why? He doesn't have a plan for himself. And he finally went, well, my dream is that we uplift humanity and you live a better life. Something like that. Very simple. He said this, I never put myself into the equation. I say wait and learn as we go. Thursday was the first step of the new beginning. Next week, if things work out, we'll have another one on Thursday. That'll be step number 2. I know people are going to say, how many steps are there? Enough. There's enough steps to get us to where we want to be. Listen, this is a plan and it's bigger than we are. You do not want it. You do not want it to come early. You do not. Inside, money-wise, oh man, I wish it would happen sooner. But I don't want it to happen any sooner than it's supposed to happen. That's the plan. But it's coming now. Why did Ash come out yesterday? He said, even me coming out today is strategic. So let's let it go. Let's live until next week. Let's tell people if they're not sure, go listen to the video. That's all I can say. Thank you, sir. Thank you, sir. So very well said, sir. And Colin Manna, sir. So you want to say what you want to say? You ask questions too. So you want to say something? Yeah, I will. Normally, I've just said a lot of things here, which is really, really good. And I think we are really in a much better place than before. It is really, really amazing where we are now. And if, like Maddie said, if people don't get it, they should go and watch the video even 100 times. That's what I do. I was watching it before I joined this webinar. Though I was in there, but there are things that maybe I've missed. So I watch it again and again, listen to it, watch it again to make sure there is a sense. And Ash spoke very well. It was clear. There was 100% clarity in it. So we shouldn't allow someone to come and tell you. And if someone come in, tell the person, were you there? He said, no. Go and watch it and we can have discussion. Don't listen to me, like Maddie said. Don't listen to anybody. Watch it first. Then you can have that thought and say, I said this, but why are you saying this? But where I want to go, I said something, I will not even go on to A, B, C. But there was one thing I picked that made me to feel, even brought tears in my eye. It gave me sleepless night. I spoke to Maddie this morning, spoke to Comfort. I called Oliver, they were not, Oliver was busy. I was working, but I was thinking in my own head. I said, what Ash is really saying, do we really get it or what? I said something, and that was a soul searching. I was searching my own soul, if I'm really who I am. I said something. He said, if there is anyone that can work for you without getting anything in return, go and look. He said, it's not about me. It's not about Ash Mofara. I'm saying, even among your friends, your family members, the whole of your life, have you ever found someone who will work for you without any ulterior motive, without getting anything, hidden agenda, getting something in return? If you see that person, you must cherish that person. I searched my own heart, my livelihood, and there was none. And I believe if all of us want to say the same story, there is no one who will work for you without getting anything. Ash make it clear. He said, this is not for me.
If I will even get nothing in return for my own sanity, build this company, and this is the only thing I can live for humanity, and the next day I die, so be it. And I'll stand before God and said, I played my own part on this planet Earth. I've left a footprint. Those who are behind, you can take it and run away with it. The way Moses handed the baton to Joshua, he said, I've played my part. I saw the promised land. Now you have to take the people according to God's will. How many of us can do it? You work all your life, toil with beatings on your back, spittum, and you said, I've played my part. And the rest belongs to you on this planet Earth. One of the things I want to say is we have to remember that we are here to leave a legacy for our generation. Like Moses said, may God teach us how to number our days so we may get a heart of wisdom. Let us look ourselves and know that our life is like a flower that blossoms in the morning, and in the evening it withers, and the wind will blow it away forever and ever. How many of us would think about that we can do something for others and just feel like you are building for your children's children? Let my name be written on a pillar of stone where people will read it and say, Mr. Waseem was there and he was part of it who built this thing we are enjoying today. That's exactly what Ash is doing. A legacy for generation. Yes. Thank you. Yesterday, that was what I took to myself. I know, yes, I came in before for the money, but I saw something bigger than myself. And I said, wow, it's not about me anymore. It's about something for generation to come. We are living in a difficult moment now where crises are there everywhere. We are in a company where we can make a difference in our own locality, around your neighborhood. You can build big mansion, but what about the people living around you? What about the roads that lead to your own house? What about the people who sit beside you, your neighbors, who doesn't even have water to drink? Are we ready to provide it to them through this company Mr. Ashmore is building? That is what he wants to bring to the world. Where I hold your hand and you hold somebody's hand, you lift it up. And the next person hold the next person's hand and lift it up. This is where we are today. And that's what I got in. I made a statement. I said, good things always happen to bad people. Bad things always happen to good people. Have you ever seen a place where bad things happen to a bad person? No, it will never happen. It always happens to those who want to do good. Good comes with trials and tribulation. And that's where Mr. Ash Mufara found himself. If it was about Mr. Ash Mufara and his family, I tell you 100%, he will not face what he is facing today. But because he brought complete strangers, people who never understand the business that Mr. Ash Mufara is in, the magnitude of it, they think it was about them, not about us, not about the world. And they twist things around to fit their own definition. But what happened? God turned it back and opened Mr. Ash Mufara's eyes to see the distance and where Mr. Ash Mufara wants to go with you. He said, you, Mr. Ash Mufara, before I formed you in your mother's womb, I called your name, and you were formed for this mission. And I will not let anything happen to you. Money is not the problem, but the vision and mission which have impact in your mind is what I want, where I want you to take you to go. And you must fulfill this mission before your time comes, because that is what I ordained before I even formed you in your mother's womb. And that is why nobody can destroy it, whether we understand it or not. But it is divine ordained that it will happen in our own eyes, and we will all celebrate those who didn't happen to see it. And I always said, it's not about me. There is one thing we fail to understand. Who can add a day in his life? Who can count the number of hairs in their own head? Who knows the number of sand that is on the shore? It's only God. He puts you somewhere and he can tell you, Mr. Waseem Collins Manor, I've put you in this company, not because you will enjoy it, but to lead people in it. And the next day, the money is in your bank account,
God called your life and said, you are playing your part on this planet Earth to bless others, you never know. Today belongs to us. Yesterday is gone. Tomorrow doesn't belong to us. It belongs to God. Mr. Ashmore is playing his part. And when we start to look at it, shift behind and say, this man is doing it not only for us, but for generation to come. We are just a vessel to carry it to the world and say we have played our own part too and hand it to others. That is the joy and that is the beauty we have to stand on. And that is what I stand on to see this mission come to pass. Wasim, I thank you very much to Thank invite. you. Thank you. Very wonderful. Wonderful. And guys, you are doing superb job. Wherever you do Track Pros or Heroes webinar, or hats off to you all guys. You are giving your precious time from your busy schedule. It means a lot. Aisha Asim from Pakistan is another great leader on passive leader has joined. She's with us. So Aisha, Marty Digamos are here and Colin Manasar. So we want to say something. You are mute. Hello, sir. Good day to both of you, Sir Marty and Collins. Hi, and great to see you here. And we are very much pumped up, excited as always, because there are very nice updates. And I think it was a wonderful webinar by Mr. Ash, and we are just I don't know, I'm just reminding myself of all the each and every. I'm just going back to that webinar and listening it again and again what Mr. Ash said, and I cannot believe that what he has gone through, and we know that he was doing a lot and he was suffering a lot. Whatever is has been done by some whatever he said, but now I think we should look forward and we should look at the bright side. Whatever is happening is going to happen now, and I think we are very much excited. I think more excited than before of about what is coming up, and we are very much hopeful, and we, as you know, that we believe in Mr. Ash. We always believed in him, we always believed in his vision, so we know that whatever he's going to do will get us to a much better and much better place, a better place in this world. So I know because of his vision. I'm not saying that it's a business, I'm not saying that it's a company. We are always with this vision, we are always with, we know that there is something good about whatever he is going to do. That's the main thing. We are not involved because we don't know about what is the structure, what is he's going to do, because we were only following what he was telling us, and you know that the 80 and 70% information was with him. We didn't know what was happening at the back end. We know that it was a lot, but we don't know what are the minute things, and what the steps he was following, whatever was happening. So I don't want to get into those details, but um, to wrap things up, I just want to say that whatever is going to happen, we should feel very much proud that we are with a great leader, a leader who believes in himself, a leader who believes in his people, those people who support him, and he knows that he has a strong back with him, and he knows that whatever he's doing the right thing. So I think um, it's all good. So uh, thank you for coming here, and I really appreciate you, both of you, being here and giving your share. So yes, Mr. Wasim, thank you. So Aisha, yesterday Ash described the updates. SEC, former employees, and affiliate commission. So, what is your favorite updates? Well,
uh, all were my favorite. You know that we are very much eager to listen to whatever he wanted to say, and uh, I think if it was not about those that it was a long webinar, I must say it was not a short Mm, one, and he had to say a lot of things. Because a lot he has gone through a lot, and a lot of time has been spent, so he wanted to say a lot, but I think he did a very good job. He conveyed, as he always does, he conveyed the, I think, a lot of things in his in some sentences, and it was a very those were very important lines which he said. First of all, he told everybody that the company is there. He said that he has not gone anywhere. He is there always, and he is there for everyone. So he was saying the second thing which everyone wants to hear is about those pending commissions, those whatever they want the money or the commissions, whatever they were waiting for. So he told them that he is going to clear all that in the coming days. And he's also the thing which made me very much excited, that he said that we will have webinars again, and those webinars would he would tell us that when we will have those webinars, and it will be a very proper sort of thing, and we are going to see more of him. We are going to hear more about our company now. So I think it was really very very exciting and a wonderful thing to say, and the people were waiting for it, and I think it was high time now people wanted to see him and know more about what's happening. So yeah. yeah, great, wonderful, wonderful. So I think people liked updates about affiliate commission, but my favorite update was SEC, about SEC, Yes, yeah. because uh, things were stuck due to SEC. So this is going to resolve very soon. So it is very good updates. So what do you want to say about it? Yeah, he was saying that whatever the things were with SEC, it's all been dismissed now. They have just I think they have come out clear from that, and now he's not going to rephrase whatever has been done. He wants to uh, 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 I think follow new steps, follow new paths now, and he has I think roadmap for a new. I think we should say that a new beginning. He is going to introduce another. You can say a company or a channel which will take us towards our goal, and he wants us to he will introduce whatever is going to happen, whatever new I think you can say a new company which is sort of on passive in disguise, you can say that he will introduce us to that, and with the same vision, which and with the same I think the values which we are following, and we will follow. So I think yeah, nice things to come, I can only say. So SEC, I think we should say bye bye to SEC now. So yeah. Marty Yeah. sir, you want to say something? Okay, I Me? think she's not. Yes, 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 No, no. I just want to. I want people to picture that there's a roadmap where we need to go, yes, and Ash has in the past told you we're going to go this direction, this much time, then we're going to turn right, and we're going to go. He stopped doing that. What he's going to do now is this trip is still going.
The train is going down the track. We are on the train. When we arrive at the next destination, then Ash will say, "We are here. This is what we did. This is how we got here. Boom. I'll see you next week." The train takes off, still going. When he gets to the next destination, he will say, "Now we are here." Instead of saying where we're going, let's remember something. The technology, the what Ash is building is very unique, and there's a lot of people that want it to be successful, and there's a lot of people that don't want it to be successful, and there's some people that would love to have the technology. So I think it's better as we take this train. Yes, the windows are closed. We can't see where we're going. But if we trust the conductor, which is Asripara, then sit down and relax. When we get to the next destination, webinar comes on. He'll tell you where we're at. Things look good. Okay, let's go. And the windows close again and we go. It doesn't stop us from living our lives. But I just think for Ash, from the way he said it, the safest thing, the best thing, because I remember in the last few years talking to the IT guys, OTech pros, they had always said, I don't know if I would say that out in the open. I don't know if I would share that. Um, we Mr. Mafar learned a lot. The company learned a lot because he's got a big heart. He's very trusting uh, to the point where it could hurt him. That's why we're here to protect him. But he learned a lot. So now I'll tell you what if you trust me and you want to be here, then you trust where we're going. I'm not going to give you every mile. I'm not going to tell you every 3 miles. The next destination, I will tell you. You will see it, and we go, "Oh, wow, very good. Okay, let's go," and take off again. And I think eventually we hit the point where we're running, we're selling products to the world. People are starting to live their dream. Then they can share it, fill your pockets, do what you got to do, and then in turn uplift humanity. That is probably the best way I could explain how I would look at what's going on. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल। सो आयशा, कुछ कहना चाहेंगी आप? आयशा, या आप अब म्यूट हैं? यस यस, आप आई थिंक आप प्रोसीड कर ले मैं आगे। हाँ, क्योंकि मैं ये उर्दू सेशन था तो उन्हें बता देते हैं कि दूसरी तरफ क्योंकि लोग सुनना चाह रहे हैं। सो वी मूव टू Urdu update session. So because we are connected with besides Pakistan 3 countries, India, Bangladesh, and Nepal, because they understand Urdu. And one thing more, in speaking Urdu and Hindi is same, almost same, in written different. So people talk in Hindi, we can understand like Urdu. So we talk in Urdu, people understand. They think it's Hindi. So Oh, that's why we receive Indian audience, Bangladesh audience, and Nepal audience. So that's it. So we move to the Urdu update session. So thanks for your time, Marty sir, and thanks for Colin Mana sir. You can stay if you here, if you want. So because people are waiting, I'm getting messages. So because it was long session, so 4 hours webinar. So people few things understand, few confused. So that's why. I'm doing a detailed session, word to word. Actually, I always translate the Ash wording, not any other YouTuber or oh, understand. very good, bro. So, I'm not exaggerate. I asked a question about what Gulsminder said, but it's not mean. I just asked to you. I'm not supposed to that wording in my webinar. So I whether people understand or not, I say word to word. So same Aisha do. Aisha message us. Well, So we always stick to what Sarash says, and whatever he wants to say, whatever he conveys us wants to convey.
I think that's the main Yeah, thing. Asha, we have another guest, surprise Okay. guest, and I think Marty Digama sir knows him. Red Redfern sir. Hmm? Hello, No. sir. Sir, good day. Welcome. Hello, sir. Oh my God! There goes the neighborhood. Yeah. Right. Hey, I Hello, think right. call Chris how are sir. you, Collins? Hey, I'm good, hey right. guys. Thank you. That's yeah. Hello, Red How sir. could I not miss this? So, Hey, how you doing? sir, do you remember who am I? Oh, I'm, He I'm got himself looking. a I know beer. yours is a lot darker than mine is. I just said to Marty sir, I'm following you. So I'm saying you to. I'm following you. That's a big mistake. Okay, it's a big mistake. So sir, Redfern sir, yesterday webinar was very amazing. It was long webinar, and I think first 2025 detailed webinar. We never heard detailed updates like that before. What do you want to say? Yeah, just hang on 1 second. Let me just change Yes, yes, my sure, internet sure, because sure, things are breaking up a little bit. So, sure. okay, that should be a little bit better now, hopefully. Uh, Listen, things are definitely changing. I personally believe that it's going to be for the better. If I recommend to everybody to go back and re-listen to our CEO Ashmi Farah many times. I've done it now. I'm on my second go, and I'm going to do it a third time. I think it's very important to understand and realise that an awful lot has gone on uh, during the last 6 months. He divulged yesterday an awful lot of what has gone on, but he is also shielding us from the nastiness. He's alluded to an awful lot without mentioning names. He's told us that certain things happened. But the one thing that is always standing true, and that is his drive, his desire to win. Uh, that's his focus. It's always been his focus is to do something that is going to be impactful, not only to us as a community, but also to everybody else as well. And he alluded to this as well within what he has endured, what has happened, but more importantly, where his focus lies. And his focus definitely lies on the future. Now, if you do re listen to him and you listen very carefully to the words that he has said, you will very quickly understand that what is coming for all of us is going to be better than what we ever thought. Now, is it going to be on passive as we know it right now? Probably not. Is it going to be better than what we know on passive is right now? Absolutely. You know, he already has said that there's no point in bringing the same back to us again. It has to be an upgrade. It has to be better. It has to be more brighter, bigger, better than we've ever seen. And this is what excites me more than ever is that, yes, we've had ups and downs, we've had turmoils, we've had problems. He explained all this yesterday. Um, there is a way forward. There is light at the end of the tunnel. Things are getting settled, organised. They're going to be resolved, all for the good. And the future for me and all of you guys out there is certainly a good future. What's his time frame? He said 2025 is going to be a good year for all of us. How we work out that time frame within 2025, I don't know.
But one thing he did say that I think we should all pick up on is that we're not going to move forward until there is some resolution on what has happened so that we can put that part to bed. Now, he talked about the SEC case, he talked about other things that are ongoing, and he was quite adamant that these things need to be resolved before we move into the next stage. I would not be surprised that when these things are taken care of, which he is very confident about, he's obviously going to give us clarification of these as well when we move forward. He said yesterday that he hopes that he can give us more clarity by June on the SEC case. I would not be surprised that things don't start moving within this time frame. Now, here's another thing that he said that I hope you all picked up on. There is no, he said, why am I here now speaking to you people? This is by design. It's because he has something positive to bring to the table. He's always said there's no point in me being here if I haven't got something good to bring to the table. He wants to bring good things to us. There's also clarity that he needs to tell us as well, and that is the bad. And he wants, and he actually said himself, he admitted to it, that he's not very good at telling the bad. He wants always to tell the good, and this is where his focus has always been, is moving forward. So I personally believe that yesterday he was open, honest. I felt that there was a little bit of relief as well within his voice of being able to tell us the things that he told us. Why do I think that? Is because his hands have been tied a lot behind the scenes. He wasn't able to come to us to tell us the things he had. Is there reading between the lines for all of us? Yeah, of course there is, because he's unable to say certain things. There is legal process, there is things that he can't say, but he is always pointing in directions, so we have to use our brains. He said this, he said that we're not stupid people. We are very intelligent as far as this business is concerned. He also said that the next part of our business, this journey, is going to be different. But one thing is, it's going to be better. This for me is a big positive. It's something that we should all be very proud of. He also mentioned about the founder's position and how that is working out with our founders. I personally believe that he has never let us down. He is always going to make sure that, he mentioned grandfather rights and making sure that we can progress into the next stage in a audible fashion that is going to benefit all of us. I'm excited. I am so glad that my journey of On Passive has been the way it is. Why? I've learned so much. I am a completely different person from where I was 6.5 years ago. Me and Marty, we spoke today. We've known each other for over 10 years. Prior to this business, I was not that person 10 years ago that knew Marty. I now am a more confident person. I'm more knowledgeable. But one thing I do believe is, I think my astuteness of people has increased. I don't suffer fools gladly anymore. I follow people that I trust. I associate myself with positivity. I don't do negativity. And this for me has been a good journey.
not only in my online space, but also in my offline space. I like to hang with people that I like. You know, I don't do the other side of things. It's not good for your soul. And this is what I love about our community. Talking of community, I'm just going to bring this up and I'll hand it back to you. That we should be proud of ourselves for being part of this on passive community. Why? Because it's actually what our CEO thrives on. He knows who we all are. This is part of his goal, his drive to succeed for us. You heard what he said yesterday. He doesn't do it for the money. He doesn't do it for himself. He does it because he wants to leave his name as a legacy for doing good. How many people do you know in business? Sorry about the dog, by the way. How many people do you know in business who can turn around and say, I don't want your money. I don't want to earn any more money. I want to be remembered for being that guy who has made a difference in humanity, made a difference to all you people to be able to succeed in your life. I don't know anybody else who thinks like that. Everyone else I know thinks that how much money can I make? There's this big game at the moment, isn't it, for the top 5 billionaires to be the biggest billionaire. You know, they all playing each other off to be the biggest billionaire. How selfish is that? Is that a legacy? Is that something that you're going to remember Elon Musk for, or Jeff Bezos, or any of the other ones? Are you going to remember them because they were the richest person? No, you're not. But do you remember the Dalai Lama? Do you remember Mary Teresa? Do you remember all these people who do good? Yes, you do. And this is exactly what our CEO is trying to achieve. The difference. To make the difference. That is why people remember people like Ashmi Farah. I'm privileged to know the guy. I'm privileged to be part of the movement of this business. And I am so happy that we are in the direction we are. Back to you. Beautiful. Beautiful. So, Aisha? Red sir, welcome, and very warm welcome that you are here, and I'm really happy to see you all here with us. And I think it's a good day. It's really a proud moment that we are here, and we can say that we are in a good place with a good man, and we knew that his vision and whatever he's going to do would get us to a better place, would make us proud. But there were things that in between, that there was a big pause which came, and many people were negative. Many people who were with him are still standing with him, are still supporting him. But I can only say that we this is not about money. Bottom line, we know that it's not all about money. Everyone wants money at the in the end, but this business is something more. This is close to our heart. This is close to reality, I can say. A lot of business which are happening nowadays, they are not close to reality. Most they are all I think mapped out uh, with those brains who are acting behind it, and they just want the money, the material things after the whatever is in the end. But they want the material things, the materialistic part of things. But
With Sir Ash, we know that we are not only attached with him for a reason, for a good reason, and we are attached with him with, we have some feelings for him, we have some feelings, we are supporting him for a good cause, and we know that he will take us to a place where we can support others, we can do better, we can have a good quality life, and we can give people a good quality life with being with him. So I think yeah, this was much needed, and he came at the right time, at the time which where we all wanted to hear from him, at the time where all wanted to see him, and I think he was a ray of hope for a lot of people. So thank you, sir. Thank you, you all, for making this webinar a very good one, and Thank you. thank you for all you said. So, yes, right, sir. You know, one interview is pending. I think 2025 is a years of interviews, and so I'm waiting for your and Jane ma'am together interview. Oh, You will not tell lie, I think, that time. We'll sort something out shortly, Asram. So I want to take your interview in your boat also. oh, in the book. I don't know if there's enough room for you, mate. So thank you. So thank you very much, you all of you. So it was a wonderful session. So actually it was Urdu update session. So I was supposed to translate in Urdu as word to word in Urdu, English to Urdu. So because as I told earlier, uh, beside Pakistan, three country people connected with us: India, Bangladesh, and Nepal. They can understand our language. Urdu and Hindi in speaking almost same, in written different. So people talk in Hindi, we can understand, and they can understand our Urdu language. So that's why you will see huge audience from India, Bangladesh, and Nepal in my webinar session, and we go to the other session. We are comfortable, in language. So, let's start the Urdu session. Thank you very much to all of you. Thank Marty you. sir, I think he has gone. So I hope you will give me time very soon for interview session, and we'll do another session with Colin Manna and Tech Pro team also. So because this session will be different, because everything has changed. So I think it will amazing session. What do you want to say, Aisha? Yes, right. I think we should just start a new, a fresh start. Fresh. Yeah, a fresh start with a lot of things to say to people, and I think we should start it again with all the our seniors, our those people who want to give us good vibes, good support system. Whoever this support system will take us, we has taken us a lot to a long this I can say that up till here. So I think uh, yeah, we are sir sir would I think plan for those interviews with Sir Collins and Sir Red, and we will As have a a tech lot of pro, topics to yes, discuss in the future. yes, So thank inshallah, you, inshallah. you yeah, thank you, Sir Red, Sir Collins, Thank being sir. here at Hey, some very. please don't call me sir. Thank you. I'm not a sir. Oh, no, you are sir because you know that this comes out from a mouth, sir, because I think that you're the seniors, those people which we look up to. We want to hear That's from very you. kind. Yeah, we just, yeah, that's why.
It's Hey, only hey, that. listen. I think you should take you should take the praise because you guys, Aisha and Waseem, Yeah, you are the head of, for me, the Bangladesh community. yeah, I should be calling you sir and ma'am. No, no. Because you are the people that we look to the Bangladesh, sorry, to the Pakistan community. You are the people that inform your community. So the praise is yours. I Thank don't you so like much. being called sir. It's not me. Thank you very much. I'm sure Collins is the same. I agree with Red. I agree with Red. We Yeah, I are agree not with Red. sirs. Yeah, We just we just No, but normal normal I don't people. people. know. I don't Yeah, know. Collins or Red doesn't come from. We cannot say that. yeah, It doesn't yeah, come out from our. So, well, it will take time. This Yeah, same well, happened just when. take time. No worries. Yeah, will yeah, take time. Yes. So yeah. Yeah, So So yeah. and please thank you both of you for all you have done for this business. Thank you. You've been amazing. You really have kept the enthusiasm going, the belief going within your own communities. You understand what the goal is of what we're trying to achieve. I firmly believe that we will all be repaid, I think is probably a good word for our loyalty uh, to the company. And I really believe that good things are coming. Remember what Ash said yesterday. There's no point in bringing back something that is the same. It has to be bigger. It has to be better. It has to be more of a wow situation. And I think that we are all going to be in a very, very good situation. Whatever it may be, I certainly believe that our loyalty is going to be repaid tenfold because of that. So, congratulations to everybody. Yes. yeah. thank you very much. Right, sir. Agreed, Right, sir. agreed. Great, great, sir. Thank you, Wasim. Thank you, So Aisha, for having us thank, here. thank you, We are grateful. That's thank you. our pleasure. Pleasure, sir. So, inshallah, looking forward to next many webinar session. So 2025 is a very good year, as sir said. So we'll see you in many webinars like that. So coming soon, Independence Day webinar is coming, 14th August. So Coming. we got Pakistan. Remember, sir? So, so we're going to do another session. For previous 3 years, I'm going to do webinar uh, on in Korean of Independence Day. So I hope, inshallah, we'll do again, and you are all welcome to celebrate our Independence Day. Sir, It's an invitation in advance for you Thank people. That's advance. Yes. thank you. Thank okay. you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, So, sir. Aisha, let's start the Urdu session. So, Yes. so, तो आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं स्टार्ट करूं कुछ? नहीं, मैं सिर्फ सबको वेलकम करना चाहूँगी जो यहाँ पर सब लोग फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम इंडिया। हम्म, मैं उनको सबको वेलकम करना चाहती हूँ अभी। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया सबसे पहले कि आप लोग अब हमारे सेशन में आए हैं। और हम लोग यहाँ इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कंपनी की तरफ से बहुत अच्छी अपडेट्स हैं एंड सराश की तरफ से बहुत अच्छी अपडेट्स हैं एंड बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। इसलिए हम लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, वरना हम आप इस बात का ये प्रूफ है कि हम लोग खामखा सेशंस नहीं करते। हम हम्म, ऐसे सेशंस नहीं करते जिसमें खाली हम बातें करें और एट द बैक एंड कोई चीज़ ना हो रही हो। तो अभी तक सब कुछ हमें मालूम था कि बहुत चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बिल्डअप हो रही हैं, बट इसलिए हम इसके लिए सेशंस नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली फ्रॉम, यू कैन से फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, फ्रॉम कि हमें एक सही कन्वे नहीं की गई थी कि हम आगे उसको आप लोगों तक पहुंचाएं।
तो अभी जब सर ऐश अभी रिसेंट वेबिनार में आए हैं, तो हमें ये चीज़ अब हमें लगता है कि हमें अब आपके साथ बात करनी चाहिए, कन्वे करना चाहिए जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ कंपनी के बारे में कहा है। तो प्लीज़ आप आज हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। तो जी सर। आयशा आयशा इसमें ऐसा है कि हम इस तरतीब से चलते हैं। जो मैं अपडेट्स दूंगा फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं, क्या ख्याल है आपका? जी जी। ठीक हो गया? तो इस तरह कुछ एक तो मिक्स नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो क्रिस सर ने, जैसे आपको मैंने पहले बताया था स्टार्ट में कि वेबिनार स्टार्ट किया था, तो उन्होंने हम उन बातों को छोड़ के डायरेक्ट अपडेट्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि एज वेबिनार काफ़ी लंबा था, 4 घंटे का, और काफ़ी बातें हुई थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं कुछ टॉपिक्स पर बात करूँगा एक अपडेट्स के हवाले से। तो उन्होंने जो टॉपिक्स बताए थे उनमें से पहला था एससीसी के, और दूसरा था ऑफिस अब्रॉड में ऑफिस लोकेशन के बारे में कहा था। तीसरा उन्होंने कहा था फॉर्मर साबका एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करेंगे। चौथा एफिलिएट कमीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? और इसके बाद कंपनी का स्टेटस क्या, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये बात करेंगे। तो और इसके अलावा वेबिनार शेड्यूल के बारे में उन्होंने बात करेंगे, और लीडर्स कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो ये था। तो खैर उन्होंने जो बात की थी और ये कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ट्रांसपेरेंसी के बारे से कहा था। माय नेम इज ऐश अंवर और आई एम हियर इन दैट। तो एक ट्रांसपेरेंट बंदा ही बता सकता है मैं इसमें कहाँ मौजूद हूँ, आपसे कहाँ से बात कर रहा हूँ। और आई थिंक आयशा इतना डिटेल वेबिनार इससे पहले नहीं हुआ। तो पहले उन्होंने बात की, और ये काफ़ी आई थिंक, क्योंकि आई थिंक आपको शायद इतना टाइम ना मिला हो इसको इतना डिटेल स्टडी करने का, कुछ टाइम शॉर्ट था, तो इसलिए मैं बात करूँगा, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम पहली बात स्पिरिट्स के बारे में बात करते हैं, वो है एससीसी के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि 1 साल पहले जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी एससीसी ने, ठीक है? तो हमने एक ग्रेट लॉ फर्म को हायर किया था, और जो कि वो इसको देखे उन पे का केस संभाले। फिर उन्होंने मज़ीद इसके बारे में ये बताया था कि ये जो लॉ फर्म है, ये कोई अमेरिका की लॉ फर्म नहीं है, ग्लोबल इसका इमेज है। और और ये एलन मस्क एलन मस्क भी, यानी उनकी लॉ फर्म भी उन्हीं को लॉ फर्म को हायर करते हैं। ये कितनी बड़ी होगी है। एलन मस्क का नाम है, आपको पता है, जितने भी बड़े-बड़े नाम हैं, वो इस लॉ फर्म को, और बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है? तो उन्होंने ये बात कहा। उन्होंने कहा शुरू में जब हमने स्टार्ट की थी जो तहकीकात, तो वो बड़ा बिग इश्यू था, ज़ाहिर है एकदम एक ऐसा प्रेशर आना। फिर उन्होंने कहा कि हालाँकि हमने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उन्होंने जो कुछ भी माँगा, हमने जनवरी 2018 से लेकर पर्सनली मैंने वो सब कुछ जमा करवाया जो उन्होंने माँगा। कहते हैं ये वो वक़्त था जब हमने बिज़नेस ने हमारी स्पीड पकड़ ली थी, बट ये वाला मसला हो गया। आपको याद है उस वक़्त हम लॉन्चिंग की तरफ जा रहे थे, जब जब ये हो रहा था, ठीक है? तो लेकिन ये सब पर्दे के पीछे हो रहा था, और उन्होंने कहा था लेकिन ये कि ये अब जब तो जो कुछ भी एससीसी का केस होता रहा, मैं यहाँ आपके पास आता भी रहा, अभी मैं आपके साथ फ़न कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मुझे पता है मैंने अपनी फैमिली के साथ कितना रफ़ टाइम गुज़ारा है बैक एंड पे, ठीक है? उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि कुछ हमारा साबका अमला था जो उनसे मुकम्मल कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने हमें वो तमाम डेटा देने में हमारी मदद की, जो हमसे पूछा कि हमने जमा करवाया। तो क्योंकि उनके एम्प्लॉइज़ ने बुरा तो किया, लेकिन अच्छे भी होंगे कुछ लोग, उन्होंने हेल्प की। तो इस तरह कहते हैं हम क्योंकि हमें यकीन था कि हम बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाएँगे, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट हैं। फिर उन्होंने एससीसी के स्टाफ के बारे में बात की कि वो अपना काम प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, और मैं उनके हक में हूँ, क्योंकि सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, वरना मार्केट में अफरा तफरी फैल जाती है, बिल्कुल, यानी। और ये बड़ा, उन्होंने कहा ये जितना भी प्रोसेस था बड़ा पेनफुल था। और उन्होंने कहा कि मैंने ये इस दौरान सीखा कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें भी होती हैं, और यहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं, बुरी कंपनियाँ होती हैं, लेकिन हम विक्टिम थे, ठीक है? माज़ी में कुछ लोग जो कंपनी का हिस्सा थे, उन्होंने उसके बारे में बात की, जो छोड़ गए या उनको सस्पेंड कर दिया गया या वो हेटर्स बन गए, तो उनके बारे में बात की उन्होंने। अपनी अवामी तौर पर अपनी नफ़रत का इज़हार किया एससीसी के केस के हवाले से। इनका मिशन सिर्फ़ यही था, ऐश को तबाह किया जाए। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने मुख्तलिफ मौक़े पर कलेक्टिंग मनी, यानी कैम्पेनिंग वगैरह की तरफ गए,
यानी उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो अच्छे काम के लिए, सिर्फ़ इसलिए कि ऐश मुफ़ारा को तबाह किया जा सके, ठीक है? जैसे-जैसे हम हमारा टाइम गुज़र रहा था, हमारे नफ़रत करने वाले भी बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने क्लब बना लिया, जैसे कि हमने देखा कि यूट्यूब चैनल वगैरह ऐसी चीज़ें बड़ी थी, ठीक है? उन्होंने ज़ाहिर है वो लोग ज़्यादा थे। उन्होंने कहा पिछले 2 सालों में हमारा जो साबका स्टाफ था, उनमें कुछ बैड एप्पल ने काफ़ी कुछ बुरा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम खुली किताब है। फिर उन्होंने बताया कि 2000 ये यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, लेट 2018 से शुरू हुआ। फिर उसके अलावा 2021, 2022 फिर उन्होंने हमारी साख खराब करने की कोशिश की कि ऐश का नाम गूगल में उन्होंने कहा कि इनका नाम नहीं आता। इस तरह की उन्होंने काफ़ी प्रोपेगेंडा किए। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हुआ, हमने अपनी मनी भी को भी लॉस किया, लेकिन हम इसे रिकवर कर लेंगे, लेकिन ये कैन नॉट रिकवर ब्रोकन ट्रस्ट। जो लोगों ने ट्रस्ट को ब्रोकन किया, हम उससे तो रिकवर नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा हम बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं, बहुत मुश्किल वक्त था। उन्होंने कहा लाखों रुपए लगे हमारे इस प्रोसेस में, एससीसी के प्रोसेस ने। उन्होंने कहा अब्रॉड का बिजनेस मुतासर हुआ और केवाईसी का प्रोसेस ज़रा डिस्टर्ब हुआ, ठीक है? उन्होंने ये बात की थी। और तो उन्होंने कहा इससे कहीं ज़्यादा हुआ जो हमने सोचा था। तो गुड न्यूज़ उन्होंने कहा यही है कि वेरी सून, बहुत जल्द ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी। कि उन्होंने कहा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने पेशेंस के साथ हमारा साथ दिया। जी आयशा, अब हम इस चीज़ को आप डिस्कस करें, तन फिर हम आगे मूव करते हैं। हम म्यूट हैं। सॉरी जी। मैं कहती हूँ कि हमें पता है, हमें हमारा इस चीज़ पे बिलीव है कि जब क्रिएशन हुई थी अच्छाई की, तो उसके साथ अल्लाह मियाँ ने बुराई भी जो है वो बनाई है, ठीक है? अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें बनाई हैं, हमारा ये बिलीफ है। और ये वैसे भी हर किसी को ये पता है कि जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है साथ में। तो ये इट गोज़ हैंड इन हैंड, ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। इस तरह कभी नहीं होता कि अच्छा ही अच्छा रहे, और इस तरह कभी नहीं होता कि हमेशा बुरा ही रहे। तो ये हमें मालूम है, और यही कुछ हुआ है। अ, हमारी मार्केट में, हमारे बिज़नेसेस में, इस दुनिया में काफ़ी कुछ ज़्यादातर तो चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं, और बहुत सारे लोग बिज़नेसेस कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो मटेरियलिस्टिक ही हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि उससे पैसा मिले। बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ़ दिखाई जाती हैं कि बिज़नेस है, और उससे बस पैसा ही लिया जाता है। वो सामने से आपको बिज़नेस दिखाया जा रहा है, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, और अब तो ख़ैर यूट्यूब और इंटरनेट का दौर है, सब चीज़ें। तो वो जब आपको ये सब चीज़ें एक तस्वीर दिखाई जा रही है, एक पिक्चर दिखाई जा रही है, एक समझें फ़िल्म दिखाई जा रही है एक तरह से, और वो दिखाया जाता है कि ये जो है बिज़नेस है, ये सब कुछ अच्छा-अच्छा है, और आपको इससे भी अच्छा आपको मिलेगा। जितना आप करेंगे उससे आपको दुगना तिगना और ट्रू फोल्ड फोर फोल्ड मिलेगा। तो हम जब इस चीज़ को पर बिलीव करने लगते हैं, तो हम समझें कि इसको, ये हमें ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं। एक हम ऐसी फेरी टेल में होते हैं, क्योंकि हमारे जहन में नेगेटिव चीज़ें नहीं होती, और ना वो दिखाते हैं हमको नेगेटिव चीज़ें, हमेशा अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा ही होगा, ख़राब या कुछ बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें दिखाया यही जा रहा है। लेकिन जब एकदम कोई चीज़ ऐसी होती है, या तो कभी वो कंपनी हमारे पैसे लेके भाग जाती है, या वो कंपनी, फ़र्ज़ करें कि मैं ये नहीं कह रही कि वो ख़राब ही होती है, अगर अच्छी होती है, तो उसके साथ कोई बुरा वक़्त आया हुआ होता है, तो हम फिर नेगेटिव हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया? क्योंकि हमने तो अच्छा ही सोचा था, हमें तो अच्छा ही बताया गया था, हमें तो ये बताया गया था आगे इतना अच्छा होने वाला है कि हमारी नस्लें ऐश करेंगी। आगे तो इतना अच्छा होने वाला है कि हम अपने पास तो रखेंगे ही रखेंगे, इसके अलावा हम इतने लोगों को दिया भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हम ज़हन में बिठा लेते हैं, और हम कहते हैं कि अब बुरा ही कभी भी नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं है। ज़िंदगी के साथ अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें हैं, और यही बात हमें नज़र आई है। अभी जब हम इस कंपनी के साथ हैं इतने अरसे से, 2020 से मैं हूँ, और 2020 से मेरे ख्याल से सर वसीम भी हैं। तो अब 2025 आ गया, अब यकीन करिए ऑलमोस्ट 5 इयर्स, या ऑलमोस्ट 5 2020, इयर्स। जब 2023 का एंड था, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा, और काफ़ी चीज़ें मैंने सुनी कि नहीं भई,
आपका आपकी खाम ख्याली है, आप गलत समझ रहे हैं कि ये जो है कंपनी अभी की अभी लॉन्च हो जाएगी, ये कुछ नहीं होगा, 2025 तक कुछ नहीं होना है इसका। तो मैं ये सोचने लगी कि ये लोग बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ है, हमें ये था कि जाहिर सी बात है, हमें जो बताया जाएगा हम उसी को फॉलो करते हैं। और जिस तरह चीज़ें चल रही थी कि नहीं भाई लॉन्च होने ही वाली है, दुबई में बहुत कुछ हो रहा था, बहुत सी चीज़ें, मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, इतना ज़बरदस्त पीक लेवल पे एक कंपनी जा रही थी, ऐसा मोमेंटम पकड़ा था कि बस लॉन्च के करीब थी। और इवन हमें फिजिकल प्रोडक्ट्स की डिटेल मिल गई थी, हमें ये मिल गया था कि इसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स ये हैं हमारी, और डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम ही शुरू कर रहे थे। ओ कनेक्ट आ गया था, हम उस ओ कनेक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, हमने यूज़ किया है, और हमने उसको यूज़ करते हुए उसके फ्लॉज, उसकी मिस्टेक, सब कुछ हम ठीक भी कर रहे थे सब लोगों के साथ मिलके, वेबिनार्स कर रहे थे इसके लिए। ओ कनेक्ट के ऊपर हम टेस्टिंग फेज चल रहा था। तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि ये चीज़ें नहीं होंगी या आगे जाके ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब एकदम से एक सेटबैक मिला, एसईसी की तरफ से ये बात मिली, हमने कहा कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, ये तो ये सही नहीं है। और सही बात ये है कि लोगों ने यही शुरू किया कि ये भी वैसी ही एक कंपनी है जो कि इस तरह से एक अच्छे जो बाग दिखा के और भाग जाती है। लेकिन अभी जो रिसेंट सर ऐश आए हैं और उन्होंने से बातें की हैं, हमें सर ऐश हमेशा से उनकी हर बात समझ में आती है, और उनकी इन बातों से हम हमेशा जो है पॉजिटिव रहते हैं कि वो बात हमेशा दिल से कहते हैं। वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते कि जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छाई दिखाने वाली। वो हमेशा अपने साथ अपने मसले भी बताते हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं प्रॉब्लम्स, और उन्होंने अभी भी यही किया। इससे पिछली जो वेबिनार्स थे उसमें भी उन्होंने कहा कि उनके साथ जो जो हो चुका है, और अब वो एक पॉज ले रहे हैं। अब वो जो भी कहेंगे, जो भी बात आके बताएंगे, वो उन्हीं के मुंह से आप सुनेंगे, तो आप उस पर यकीन करें। और यही हुआ, उन्होंने अभी जो रिसेंट उसमें बुलाया और उन्होंने ये बातें कही, उन्होंने सारा बताया कि एसईसी ने किस तरह से एसईसी के साथ उनका टाइम गुजरा है, और वो चीज़ें हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की जो उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं और जिससे वो गुजरे हैं। मैं अभी इसमें ये नहीं कहूँगी कि हम ये सर ऐश जो है, हम ये समझते हैं कि सर ऐश किस चीज़ से गुजरे होंगे, क्योंकि ये उससे बहुत ज़्यादा था। जब इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप फँसते हैं तो आप बिल्कुल डेड एंड होते हैं, डेड एंड पे आ जाते हैं। आप समझते हैं कि नहीं, अब आप इस कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन क्योंकि उनके अज़ाइम बहुत ऊँचे हैं, वो ये चाहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा करना है, सिर्फ़ पैसा ही नहीं कमाना। इसलिए वो ये चीज़ उनको लेके चल रही है आगे, और ये चीज़ हमें भी लेके चल रही है उनके साथ। हमें, अगर हम सिर्फ़ पैसे की बात करते तो अभी तक हम जो है, अभी हम शो अप नहीं होते, हम ये बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि अभी तक हमें पैसा मिला ही नहीं है। हमें कोई कमीशंस की वादा अभी किया ही नहीं है। अभी उन्होंने हमसे कहा है कि अगर जैसे ही सब कुछ होता है, सबसे पहले पेंडिंग कमीशंस की बात होगी। ये तो पहले भी था, ये तो पहले भी कहा था उन्होंने। लेकिन अभी वो इस बात से जो कहने आए हैं, वो ये कहने आए कि अब वो उस चीज़ों से निकल गए हैं। अब जी काफ़ी क्लियर, एक एक समझे कि एक, आप कहते हैं ना कि हवा जी क्लियर हो गई है, हाँ और उनको अब साफ-साफ नज़र आने लगा है कि अब वो किस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने हमारे साथ आके बात की, जी उन्होंने बताया कि अब वो क्या सोच रहे हैं, और अब वो ये कंपनी काफ़ी नई तरीके से आएगी। अ, अभी उन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं की हैं कि उसका नाम चेंज होगा या कंपनी चेंज हो गई है। कंपनी वही है, ऑन पैसिव वही है, जैसी जैसी है, जैसी बताई गई थी। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग वो कुछ नया लेके आ रहे हैं, कुछ नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें उस चीज़ के साथ चलना है, और ये फिर आगे हमें समझें, आगे जाके ये सब चीज़ें हमें ऑन पैसिव से जोड़ेंगी। हम उसी रास्ते पर हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी सर ऐश हमें कहेंगे, हमें वही करना है और उन चीज़ों के साथ ही रहना है। तो बस अभी अब तक के लिए तो मुझे यही आपको मैं समझाना था। देखिए, हम बहुत ज़्यादा कोई कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं बता आई सकते। थिंक नहीं नहीं, अब हम अपडेट टू अपडेट डिस्कस करते हैं। सो यस, यस। ये आपके लिए भी इजी होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अपडेट्स हाँ, तो बड़ा लॉन्ग मैं सेशन ये कह रही हूँ कि आप देखिए कि जो सारा एक समझें कि इंट्रो था एक तरह से। लेकिन अभी जो ये पॉइंट आप बताना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से हम पॉइंट टू पॉइंट बस उनको पॉइंट समझा पॉइंट देते हैं, बस यही चीज़ें हाँ हैं जी, खाली। जी, जी, जी। ओवरऑल तो हमने बता दिया उनको। ओवरऑल यही है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये एक उन्होंने फिर ये कहा बहुत सी अफ़वाहें हैं, कोई अगर आपको बाहर से कुछ भी कहता है और अगर आप उस पर यकीन कर लेते हैं, तो उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, उन्होंने कहा। मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ,
क्योंकि अगर कोई आपको डिफरेंट स्टोरी बता रहा है तो यकीनन उसकी नीयत सही नहीं है, वो आपको ये बता रहा है। उन्होंने कहा सच हकीकत ये है कि हमने बहुत मेहनत की है और एक पेनफुल प्रोसेस से हम गुजरे हैं। तो हमें यानी हमें हमें यानी महँगा भी पड़ा सब कुछ, क्योंकि हमने एक महँगी लॉ फ़र्म को, जैसा कि मैंने बताया था, कि हायर की, जो कि अमेरिका की, बल्कि बल्कि वर्ल्ड की, ग्लोबली, जिसे एलन मस्क और बिग फ़िगर्स ने हायर किया था। तो अ, हमने उसको हायर किया। फिर उन्होंने कहा कि हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, हम हमारे थ्रू किसी को नुकसान नहीं होगा। आई थिंक ये बड़ी बात उन्होंने क्लियर कर दी कि यहाँ पे जितने भी होंगे वो कोई किसी को नुकसान नहीं होगा। फिर उन्होंने एक और बात की कि नेक्स्ट कमिंग वीक जो आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी अपडेट्स होंगी। हम ये अपडेट्स यहीं पर छोड़ते हैं, उन्होंने ये बात की। और कमिंग वीक्स में और हर हफ्ते अब वेबिनार होगा, नेक्स्ट वीक भी होगा। और बल्कि अभी जब वेबिनार स्टार्ट हुआ था तो मैंने मार्टी सर आए थे, मैंने कहा इट वाज वेरी गुड वेबिनार, सो आई मिस दैट सेशन। सो उन्होंने कहा यू आर इन द लिस्ट वसीम, तो दिस इज गुड। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है इंशाल्लाह मैं भी वहाँ मौजूद हूँ, आयशा भी वहाँ जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम वहाँ जाएँ या ना जाएँ। एक्चुअली हमारी ये एक क्या कहते हैं, डिवोशन कह लें या मोहब्बत कह लें, ये जो भी हो, कि हम अपना जो अपना अपना बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक बात ये की, फिर उन्होंने कहा कि जो फाइनल सेटलमेंट बहुत जल्द हो जाएगी। और आई थिंक ये इसके शायद 3 से 4 वीक लगेंगे कमिंग, क्योंकि कुछ उन्होंने तो क्लियरली इतनी बात नहीं की, बट गुरसमिंदर ढीलन जी की मैंने वीडियो सुनी थी, उन्होंने ये बात की थी। तो हो सकता है कि और उसके बाद केस डिसमिस हो जाएगा एससीसी का। यानी ये नेक्स्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वेबिनार भी करने का मकसद ये था कि ऑलमोस्ट ये एससीसी, क्योंकि एससीसी की बेस पर सब कुछ डिस्टर्ब था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा डेट और टाइम नहीं बता सकता, उन्होंने कहा चंद हफ्ते ले लो। चंद हफ्ते से मुराद उन्होंने यही बात की ना, 3 से 4 हफ्ते, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये कमोवेश हो सकता है, ये कोई डेट नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात की, कमिंग टू जून दिस विल बी समथिंग हिस्ट्री ऑन ऑन पैसिफिक। तो आई थिंक ये एक बड़ी न्यूज़ है कि आप म्यूट हैं। और एक बड़ी आप म्यूट हैं आयशा। अच्छा, तो ये एक हिस्ट्री में कहते हैं बड़ा कुछ होगा, इतनी इतनी शोर से कह रहे हैं, तो आई थिंक एक अमेजिंग कुछ होने वाला है। फिर उन्होंने कहा हम फाइनल लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल सेटलमेंट हो रही है। फिर उन्होंने बात ये की। फिर उन्होंने एक और बात की थी कि मैं आपको टेक्निकली मैं बता रहा हूँ कि ऑन पैसिव बंद नहीं हो रहा और हम कहीं नहीं जा रहे और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगले हफ्ते उन्होंने उसकी बात की। तो ये तो चलो आपने पहले भी डिस्कस कर दी। हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है लोकेशंस। लोकेशंस के बारे में उन्होंने बात की कि उसके बारे में उन्होंने बहुत क्लियर बात की। उन्होंने कहा कि तो ये कि उनको मैं डिटेल से बता दूंगा, आपने ओवरऑल इसका बस शॉर्टली आप इसका बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट है, तो हम इस पे ज़्यादा आगे आगे जल्दी ही करेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो उन्होंने बताया कि जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के उनका बैड एप्पल होते हैं, उन्होंने कहा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बैड एप्पल ने हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। उनकी दिलचस्पी थी कि ऐश और उसकी वाइफ को नीचे लाना, ठीक है, और कंपनी में फुल कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने ये उन्होंने जानबूझकर किया, कोई एक्सीडेंटली ऐसा नहीं हुआ, यानी उनकी इंटेंशन थी। तो उन्होंने कहा वो यानी ऐसे थे कि ज़ाहिरी तौर पर बहुत अच्छे हों, और लेकिन उनका दिल अच्छा नहीं था, ठीक है। और इन्होंने चीज़ों को लेट करने की कोशिश की। तो उनको पता था चीज़ों की लेट होने की वजह से एसएससी के केस को मुश्किल कर देगा। एसएससी को डिस्टर्ब करना चाहता है, इसलिए उन्होंने चीज़ों को लेट करने की कोशिश की। आपको पता है ना, उसी वक्त एसएससी तो पहले हो गया था, बाद में चीज़ें होने लगी थी, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा था कि सब कुछ मेरे हाथ में, मेरा वक्त है, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लीन था, ठीक है। लेकिन यह एक आजमाइश थी, उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने एज ए जोक भी कहा मुझे, कहते हैं किसी ने ना रिसेंटली किसी ने बताया, अंकल कह दिया मुझे। तो मेरी यूथ उन्होंने बता दिया कि मेरा यूथ टाइम ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी मैं जवान हूँ, शायद मैं उससे 1-2 साल ही बड़ा हूँ, लेकिन उसने मुझे अंकल कह दिया। आई थिंक ये सिर्फ लेडीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉसेस का भी है। तो उन्होंने कहा, फिर एक और बात की कि
उसके बारे में बात की, जो उनका पास्ट जो बैड जो इनका वक्त गुजरा, उनका कि हकीकत ये वक्त बहुत जालिम है। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं इतना मोहताज नहीं था जितना अब हूँ। ख़ास तौर पे जब उन्होंने एग्ज़ेक्युटिव को हायर किया था, उनकी पोज़ीशन को उनको ओवर पे भी किया, ठीक है? लेकिन वो एक तो वो क्लीन नहीं थे और ग्रीडी थे, और हर चीज़ गिरती जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ये सिलसिला शुरू हुआ ऑफ़िस 2000 जो 18 से। फिर उन्होंने बात की कि हमने जो ऑफ़िस बनाया था 2018 से, तो साल के एंड पे कलकत्ता में बनाया, फिर बेंगलोर शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद हमने हैदराबाद में अपनी 3 मंज़िला बिल्डिंग बनाई। हम उस वक़्त 3 लोकेशन में कर रहे थे, फिर हमने डिसाइड किया कि एक लोकेशन में आने का 700-800 के करीब लोग मौजूद थे वहाँ पर ना, एससीसी में उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा ये ऐसा हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि फिर कोविड में हमारा काम काफ़ी स्लो हो गया था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वो काफ़ी उन्हें काम इतना वो नहीं कर सकते जितना करना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 में टेक्निकली हमने महसूस किया, उन्होंने कहा टेक्निकली जून उन्होंने कहा, हमने महसूस किया कि ये इतना टूट गया ना, इसको स्टिच करना मुश्किल है, यानी अंदर हम्म, इतनी गड़बड़ है। उसने कहा हमने लोगों को कहा कि आप जाएँ और अपना करियर तलाश करें, जब तक हम इसे फिक्स नहीं करते। जो लोग ज़ाहिर है हर लोग तो नहीं चीटर थे, कुछ दूसरे लोग भी थे। तो हमें जानता था इसमें वक़्त लगेगा, लेकिन ये तकलीफ़ दी बात थी कि हमने मुलाज़िमीन को, उन्होंने ये भी बताया कि कई महीनों की सैलरी भी नहीं दी, मिसमैनेजमेंट की वजह से, करप्शन की वजह से, दूसरी लोकेशन की। अच्छा, इन्होंने एक बात की थी, मैनेजमेंट और करप्शन और दूसरी लोकेशन की वजह से करप्शन जो, इट्स मीन के दूसरी लोकेशन से मुराद ये दुबई हो सकता है, जी। वहाँ के तो कनेक्टेड, सारी चीज़ें तो कनेक्टेड हैं। उन्होंने कहा ये एक बड़ी गलती थी, तो हमने ऑफ़िस को वाइंड अप कर दिया। हमें पता था रेजिस्टेंस अंदर से ही कोई कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये जानना बहुत मुश्किल है। एग्ज़ैक्ट। फिर उन्होंने कहा शुरू इंडिया में हमें पता था हैदराबाद में बड़ी ख़ामियाँ थीं, हमें चैलेंजेस का भी सामना था, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त था। जब हमने दूसरी लोकेशंस पर लोगों को हायर किया, डिफरेंट कल्चर के लोग आए, डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो उन्होंने चीज़ों को डाउन करना शुरू कर दिया। फिर उनकी वजह से मुश्किलात ज़्यादा शुरू हुई। फिर उनका इंडिया के कुछ अच्छे लोगों को भी उन्होंने ट्रैप कर लिया और अपने अपनी यानी जो प्लॉट का हिस्सा बना लिया, जो उनकी टीम था। ठीक है? तब हमने इनसे जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल था। प्रोफ़ेशनली ये बात उन्होंने कहा कि प्रोफ़ेशनली वो लोग बड़े हार्ड वर्किंग थे, और लेकिन ये कि वो उनके ट्रैप में आ गए थे। फिर उन्होंने टेक्निकली एक चीज़ अनाउंस की कि हैदराबाद की बिल्डिंग को जो है ऑफ़िस है, वहाँ पे कोई एक्टिवली काम नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई भी मुलाज़िम हमारा एक्टिव हैदराबाद में मुलाज़िम नहीं है, एम्प्लॉयी नहीं है। यानी ऑफ़िस की जब हम बात करते हैं हैदराबाद ऑफ़िस में, वो बंद हो चुका है। वहाँ पे कोई टेक्निकली ऑफ़िस भी क्लोज़ है और वहाँ पे एम्प्लॉयी भी कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा इखलाकी तौर पर मैं इनकी सैलरी का बाकायदा देने का पाबंद हूँ, जो कि दूसरों की वजह से थी। मैं ज़्यादा तौर पर इनका पेरोल या फंड कंट्रोल नहीं कर रहा था उनका। उन्होंने जिसको ज़्यादा डिटेल से नहीं कहा, उनका ज़्यादातर पर नहीं, अगले हफ्ते उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसी रेजोल्यूशन पास करेंगे, जो जितना भी वो स्टाफ की सैलरी है वो उनकी हैप्पी एंडिंग होगी सैलरी के हवाले से। यानी हैदराबाद में जिन जिनके सैलरीज के इशू थे, वो भी नेक्स्ट वीक ऐसी स्ट्रेटेजी आ रही है कि वो उनकी सैलरी दे दी जाएगी, जो कि उनकी वजह से नहीं थी, दूसरों की वजह से थी, लेकिन ओनर जो होता है हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ऐसा हुआ। फिर उन्होंने कहा हम नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाए, तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें आसान थी। दुबई भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी यानी सोर्स ऑफ लॉबिंग एंड कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, यानी काफ़ी लोग लॉबिंग बना रहे थे, और उन्होंने कहा एक दो लोकेशन की दुबई में इनकी जेर निगरानी थी लोगों की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें नहीं थी। तो उन्होंने कहा आई एम हैप्पी कि दे आर नॉट फंक्शनल एंड ऑपरेटिंग एट द मोमेंट। उनका क्योंकि वो नुकसान नहीं कर रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं कर रहे थे। अगर वो दुबई के ऑफिस बंद हैं उनकी तो उन्होंने कहा ये वी आर हैप्पी कि अगर ऐसा है। फिर उन्होंने कहा दुबई का ऑफिस भी ये जितने भी ऑफिस हैं अमेरिका में हैं, सिंगापुर में हैं, दुबई में, ये सब उन्होंने बंद किए हुए हैं। उनकी रीज़न मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा सिंगापुर में हमने ऑफिस में पैसा लगाया। बांग्लादेश में उन्होंने कहा हमने कुछ भी नहीं किया है सवाए परेशानी के। उनका लोकेशन के लिए हमने पे भी किया, वर्कर्स को पेरोल के लिए हायर किया, उनका लाइसेंस वगैरह डॉक्यूमेंटेशन एक साल से ज़्यादा लग गया, लेकिन हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो हमने तो वक़्त भी अब काउंट नहीं कर सकते कितना वक़्त हमने बांग्लादेश को दिया। फिर मिस्र की उन्होंने बात की, इजिप्ट की, कि उन्होंने कहा हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, बड़ा एक्सपेंसिव वहाँ पे ऑफ़िस था, लग्ज़रियस था, काफ़ी महँगा था। तो उनका वहाँ का जनरल मैनेजर था, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, वो भी मुलविस था इस सारे फ्रॉड के प्लॉट में। उन्होंने कहा दुबई में और दुबई में यानी फ्रॉड जो हो रहा था, वो सही डायरेक्शन में भी काम नहीं कर रहा था। अच्छा, जो जितने दुबई में जितने भी दूसरे वेंचर हुए जो हमने देखे थे, प्रोजेक्ट हुए, जैसे सुपर कार मजलिस और बहुत सारे हुए, उन पे सही तरह डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे वो। ठीक है? उनका टेक्निकली मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने इनफरादी तौर पर उनसे कनेक्ट ज़्यादा नहीं रहा, तो ज़्यादातर जो बैड एप्पल थे, उनका उनको क्या कहना चाहिए? उन्होंने यार उन्होंने कितना बुरा किया होगा कि उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए कि हम इन्हें एनिमल कहेंगे या क्रिमिनल कहेंगे, फिर उन्होंने कहा हम शुड बी कॉल्ड क्रिमिनल, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया, अच्छा नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको हमें पता भी चल गया था, लेकिन हमने आखिरी कुछ दिनों में उनको टाइम भी वक्त भी दिया, क्योंकि बहुत सी और सी यानी कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल चीज़ें थी जो हमने उनसे रिवील करानी थी, खुलवानी थी। और फिर उन्होंने कहा लेकिन वो नहीं जानते उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने कहा मैंने अपने लॉयर्स का डिस्कशन किया, तो उनके साथ उनकी बीवी है या बेटी या फैमिली, उनके साथ क्या करें। उन्होंने कहा ये ऑन पैसिव मेरा ड्रीम है। उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी बात नहीं है, लाखों लोगों का लोग इस पर डिपेंड कर रहे थे, वो डिस्टर्ब हुए हैं इस सारी वजूहत की वजह से, लाखों लोग। तो उन्होंने कहा वो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि यूएई, मिस्र, इंडिया, अमेरिका, कोई भी एक्टिव ऑफिस नहीं है वहाँ पे, कोई एक्टिव मुलाजिम नहीं है। उन्होंने ये बात की, पहली बात तो ये की। फिर उसके साथ उन्होंने कहा जब तक इन लोगों के साथ जब तक हम रब्ता नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ चीज़ें सेटल नहीं कर लेते गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट के इश्यूज बन रहे हैं उनके। फिर उन्होंने कहा एससीसी उनमें से एक है, एससीसी का भी कनेक्शन है ना उनके साथ। फिर उन्होंने कहा कि जब तक उनके फंड रिकवर नहीं होंगे, और उनका एक और बात भी की उन्होंने कहा कि आज भी वो लोग फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं लाखों डॉलर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने बुर्ज खलीफा की प्रॉपर्टी को पे किया, पेड है। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा इनफरादी तौर पर सब कुछ मेरे पास सबूत है, कंपनी के तौर पर भी, लेकिन यहाँ पर तो लगता है मुजरिमों का मेला लगा हुआ है। उन्होंने कहा उनको उनके नाम क्या कहा जाए, जिनका चोर कहा जाए, जानवर कहा जाए, सूर कहा जाए, पिग। तो ये कितने हार्श वर्ड है जो इन्होंने यूज़ किए। फिर उन्होंने कहा ये सब ठीक है। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने 2021 के बताया कि शुरू में कि 2022 के कोविड के वक्त में सीईओ उनको हायर किया, 3 मिलियन उनको सैलरी दी जा रही थी। उनका ट्रायल पे थे, लेकिन उन्होंने तो वो पूरा रॉबरी कर ली। ठीक है? तो कहने का मतलब बिल्कुल उन्होंने एक बात की, और जो हमारा मेन जो है ओरलैंडो का ऑफिस, वो अभी तक स्टिल मौजूद है, कंपनी यही है। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें एक चीज़ें नहीं हुई, काफ़ी चीज़ें हुई, ये आई ओपनर किक थी हमारे लिए। ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि एक बात की कि एक बात जो उन्होंने इस वाले से की कि हम नेक्स्ट उस पर बात करेंगे एफिलिएट कमीशन में, कि इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। इन लोगों के साथ उन्होंने कहा कि एक तो दुबई में ये चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ पर वो जो लोग पैसा लेके भाग रहे थे ना, उनको पैसा सीज हो गया, तो वो सारा, तो वो अगर चले जाते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है? उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा एससीसी ने उनको मौका दिया, उनको उनका कहा अब भी वक्त है, 1 महीना तुम्हारे पास आके माफ़ी मांग लो, सेटलमेंट हो जाती है। वो बेवकूफ़ लोग नहीं माने। अब देखिए उनके साथ क्या होता है, ये चीज़ें की। जी आयशा, ये ऑफिस के बारे में तो काफ़ी यानी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई। हाँ, नहीं बिल्कुल सर, मैं ये कह रही थी कि अब मैं आपको मैं और लोगों का तो नहीं कहती, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान में और जगहों पे, इंडिया, ये सब जगहों की लोगों की बात करती हूँ, बांग्लादेश एंड ऑल। हम लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए हम लोग भी वही हैं। ये तो कोई नहीं है कि हम कोई लीडर हैं या कुछ है। बस हम एक तरह से यहाँ पर सामने आए हैं, कुछ लोगों को सब कुछ पता है, वो सामने नहीं है, सिर्फ ये फ़र्क है। लेकिन हम सामने आके वो बात कह रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं कंपनी की, जो कि सर ऐश कहते हैं, और जो आप लोग भी देख सकते हैं अगर जी वेबिनार बिल्कुल। देखें तो, यूट्यूब के ऊपर जी। देखें तो डायरेक्टली, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल सकती है।
लेकिन होता क्या है कि हम लोग भी वही चीज़ सोच रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ स्कैम हुआ है, ये हुआ है, वो है। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें अभी एक-एक करके हमें पॉइंट आउट कराई, ये यकीन करें कि बिल्कुल रियलिटी से करीब है। ये पता चल रहा है और हमें मालूम है कि ये इस दुनिया में ये हो रहा है। तो जहाँ पर कोई अच्छा करना चाहता है तो उसको अगर एक बंदा है, तो 6 बंदे उसको पीछे घसीटने वाले होते हैं। ये तो बात है। क्यों? क्योंकि कोई चाहता नहीं है कि कोई आगे जाए और कोई अच्छा काम हो और उससे ज़्यादा उसको फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। नेगेटिव लोग बहुत होते हैं और आपको पीछे घसीटने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ सर ऐश के साथ हुई। उन्होंने अगर किसी को उसका रिवॉर्ड देने की भी कोशिश की और सही उन्होंने मेरा ख़्याल से तो उन्होंने जितने लोगों को हायर किया है और बड़ी पोस्ट पे हायर किया, उनको अच्छी खासी पे दी है, अच्छी खासी सैलरी के ऊपर रखा था। 3 अब मिलियन 3 मिलियन यस, नॉट ए शॉर्ट अमाउंट। यस। अब जो आई थिंक वो इजिप्ट का भी वहाँ का भी ऑफिस है और जी उधर जी का भी ऑफिस, जो जी। भी जो बड़े लोग उन्होंने रखे थे, उस सब लोगों ने उनको जो है उनके साथ गलत किया। और यही लोग हैं जिनकी वजह से आगे कंपनी फॉरवर्ड जो है आगे हो नहीं सकी और पीछे चली गई और पॉजेज आते रहे। और उसके बाद ऐसा हो गया कि जो एसईसी की कॉम्प्लिकेशंस बीच में आ रही थी, जाहिर सी बात है वो आपसे सवाल कर रहे थे और उनको उसका जवाब चाहिए था। तो जब ये इन्हीं मसलों में फंसे हुए थे, इंटरनल प्रॉब्लम्स उनके कंपनी के बहुत थे जो कि उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। काफ़ी चीज़ें जो हमें अच्छी वो नज़र आ रही थी और वो आगे आके बता रहे थे, वो चीज़ें थी जो करना चाह रहे थे और वो बिल्कुल पाइपलाइन में थी। जैसे ओ कनेक्ट था, ओ कनेक्ट आ रहा था, उसके बाद हमारी केवाईसी तो बिल्कुल करीब थी। हमें तो केवाईसी का हमें स्टार्टिंग मिल गई थी कि हमें ये चीज़ें आपने रेडी करके रखनी है कि आपको केवाईसी करनी है। तो ये सब चीज़ें होने वाली थी जो कि तो उन्होंने कहा ना कि जो एससीसी की वजह से जो जी, अब्रॉड में जो लोकेशंस है वहाँ पर केवाईसी का जो अमल है जो वो डिस्टर्ब हुआ। उन्होंने ये बात की थी ना, ये चीज़ की थी। अच्छा, हम आगे मूव करते हैं इसको आगे, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। और अच्छा, एफिलिएट कमीशन के हवाले से नेक्स्ट हमारी अपडेट है। तो उन्होंने कहा जब तक ये कमीशन सबको अदा नहीं हो जाता, हम वक्फे वक्फे से हम आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कुछ लोगों के अदम ताउन की वजह से, यानी उन्होंने कॉपरेट नहीं किया इनफरादी तौर पर, उन्होंने कहा मैं ऐसे डकैती करता हूँ। फिर उन्होंने कहा था रॉन्ग मूव लिया कुछ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लोगों में से, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की वजह से, जो पेमेंट प्रोसेस लेट हुआ और जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई, सस्पेक्ट हुई। ठीक है, उन्होंने ये बात की। तो उन्होंने कहा लेकिन दो मर्चेंट हैं, उन्होंने $2 मिलियन होल्ड करके होल्ड किया, $2 मिलियन। और उन्होंने कहा कि और उन्होंने कहा कि आई थिंक अमाउंट ज़्यादा थे, $52 मिलियन कहा था उन्होंने, शायद मैं। देखिए आप मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को ये पता है कि कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे थे और सब लोग हर चीज़ का इन चीज़ों का सवाल कर रहे थे। अभी उन्होंने मर्चेंट्स की भी बात की कि यहाँ पर भी ये मसले आए थे, इंटरनल भी प्रॉब्लम्स थे, साथ में एसईसी के भी क्वेश्चंस थे सारे कि ये चीज़ें आपको आके आंसर करनी है, ये चीज़ें आपको शो करनी है। इसीलिए उनको ये सब कुछ करना पड़ा कि वो नहीं, उन्होंने उन्होंने बताया कि जो दो मर्चेंट हैं उन्होंने $52 मिलियन को होल्ड किया, फंड को सीज कर दिया उनके। तो थैंक्स गॉड, कहता है अगर वो चले जाते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने यस, कहा उनमें से जो कि काफ़ी है मुख्तलिफ लोकेशन के पे रोल को देने के लिए, इनमें कमीशन भी है और $30 मिलियन है जो कमीशन बनता है। ठीक है। और उन्होंने कहा मैं खुश हूँ कि सेंट्रल बैंक ने फंड्स को सीज कर दिया है, यूएई में सब कुछ हो रहा है। उन्होंने ये लोकेशन बताई। उन्होंने कहा अगर पैसा लेके भाग जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता, जो कि उनके उनके पीछे पहले इंटरपोल को मतलूब थे, यानी वांटेड थे। ठीक है। बिल्कुल। उन्होंने कहा अभी डिटेल नहीं बता सकता। फिर उन्होंने एक और बात की जो कि ज़रा, उन्होंने नाम तो नहीं लिया। उन्होंने कहा कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने कहा क्या आप सीओओ को कहेंगे, सीएफओ को कहेंगे, सीएमओ को कहेंगे, फाइनेंस के एडवाइजर दूसरी लोकेशन वालों, क्योंकि इसका जिम्मेदार तो ऐश ही होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें उन्होंने ना कहते भी नाम ले दिए, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा एससीसी ये रकम रिकवर करने जा रहे हैं। एससीसी उन्होंने कहा कि हालांकि
उनका जो को वो कह रहे हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके पास पावर है, वो किसी भी मुल्क दूसरे मुल्क में जाकर ये सब कुछ कर सकते हैं। ग्लोबली उनका अप्रोच है। फिर उन्होंने कहा कि उनको जो थे उनको टाइम दिया था कि आप आएँ और 1 महीना आपके पास टाइम है, आप मान लें और फिक्स कर लें। वो नहीं आए, वो बेवकूफ़ लोग हैं। मैंने कहा तो उन्होंने फिर एक और बात की थी, यू डिड उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, यू नो यू डिड हराम। ये सर ने आयशा ने कहा था। तो ये बड़ी ये बात थी। और हम इसको मैं ये फाइनल जो मैं करता हूँ, तो उन्होंने कहा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टाइम लगेगा और नेक्स्ट वीक हम ये चीज़ें बताएँगे। उन्होंने कहा मैं सालों से ये बात कहते आ रहा हूँ कि ये वक़्त ले सकता है। और इट कुड बी स्टॉप, कहता है इसका या आई कुड बी स्टॉप, यानी इसका मतलब ये है कि बैकअप प्लान है मेरे साथ। तो आई थिंक फिर उन्होंने कहा था अगर एक रोड ब्लॉक अगर ब्लॉक हो, आप ट्राई करते हैं, अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप दाएँ तरफ जाते हैं या दाएँ तरफ जाते हैं। फिर उन्होंने कुछ एक हिंट भी दिया कि कोई एक ऐसा कॉर्पोरेट आइडिया की बात की जिसका नाम चेंज होगा, डिफरेंट होगा, वो करेंगे। लेकिन उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हुआ ये कि उसमें जिन्होंने साथ ही वीडियो बना दी थी, उसमें भी। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि हम एक नया एक बिज़नेस आइडिया लेके आ रहे हैं। तो उनका ऐसे उनकी ऐसे डिस्कशन हुई होगी, तो देखिए ऐसे में इस बारे में डिटेल नहीं किया, उसने नेक्स्ट वीक बता दी। तो शायद उन्होंने कहा कि इसमें ये कि ऐश कि उन पैसे को टाइम लगेगा थोड़ा, तो उन्होंने इससे पहले ये चीज़ें उसका कहते हैं बैकअप प्लान, कंपनसेशन प्लान, सब कुछ उससे बहुत अच्छा है, ऑन पैसिव से यानी सब कुछ। तो ये चीज़ें हैं। फिर सूज़ी मकरे ने क्वेश्चन किया था कि आप क्या फिज़िकल प्रोडक्ट्स होंगी इसकी? तो उन्होंने कहा था नहीं, इसका शुरू में डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगी, बाद में फिज़िकल भी आ जाएंगी। तो डिजिटल एआई कुछ ये प्लान है। अब आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन हम, तो मैंने ये मार्टी से भी क्वेश्चन किया था आपके आने से पहले कि ऐसा ने ये बात की थी, लेकिन गुरशमिंदर लीलन जी ने कहा था कि नया बिल्कुल प्लान है। तो उन्होंने कहा कि ऐश की वर्डिंग को सुनो, तो ऐश की वर्डिंग को सुनो। तो मैंने कहा जी मैं तो हम जो भी करते हैं, ये सारे लीडर हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन हम ऐश की बात ही रिपीट करते हैं। और हमने कहा लेकिन वो, क्योंकि उन्होंने अभी एक वीडियो बनाई थी, तो अब मैं पर्सनली आपसे पूछ रहा हूँ आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने बैकअप प्लान के बारे में की, जब चीज़ों को सेटल करना होता है तो ज़ाहिर है अगर वो चीज़ डिले हो रही है तो आप लोग तो वेट नहीं कर सकते ना। उनका पहला मोटिव ये है कि ये जितना भी एफिलिएट कमीशन है, पेंडिंग कमीशन मिले। पेंडिंग कमीशन के लिए जैसे ही ऑन पैसिव लॉन्च होगी तब मिलेगा। तो ये तो कह दिया गया। ठीक है। तो अभी ये चीज़ें देखिए, अभी ये वेबिनार है, इसमें मेन जो मैं कहता हूँ जो अपडेट है ये है, एससीसी का केस बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाला है, वेरी सून। उन्होंने क्लैरिटी दे दी ऑफिस के बारे में, वहाँ क्या हो, इस वजह से ऑफिस क्लोज कर दिए गए। लेकिन ये सब कुछ कहीं हो रहा है जो कि हाइड किया गया। कहीं तो हो रहा है ना, ये जो सब कुछ बना के पिछले 8 7 8 महीने ये सब कुछ ये चीज़ें बनी हैं, जितना भी नया बिजनेस आइडिया की बात हो रही है, जो कोई भी और वट एवर, इनके बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं सोचते। हम फ़ोकस करते हैं एक तो एससीसी के कि वो ये हुआ, फिर एफिलिएट कमीशन के हवाले से। ठीक है। और वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो मिलेगा। देखिए ये चीज़ें ऐसा आएंगी। उनका कि ये लोग इसके बारे में सुनना चाह रहे थे, एफिलिएट कमीशन के हवाले से, फिर ऑफिस के बारे में, फिर जो फॉर्मर एम्प्लॉय उनके बारे में उन्होंने बताया। और आई थिंक अमेजिंग अपडेट्स थी, क्या कहती हैं आप? बहुत ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ कि अभी तक अगर कोई लोग ये चीज़ें सारी काफ़ी थी उन लोगों के लिए जो कि अभी तक डाउट्स में थे कि ये कंपनी जो है भाग गई है और इसने आना नहीं है और वो पैसा लेके भाग गया है बंदा, और हमारे पैसे चले गए हैं और हमें कोई कमीशन नहीं मिलने वाले, मतलब जो ये सतही तौर पर जो बातें सोच रहे थे, उनके लिए आई थिंक ये एक वेकअप कॉल है। उनको पता ये चल गया होगा कि ये जो है अब ये चीज़ें किस तरह हो रही थी। क्योंकि हमें, लेकिन हमें मालूम है कि हम कोई भी चीज़, अभी आपको पता ही है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको सब अच्छी तरह पता है यहाँ पर कोई घर से निकलेगा कोई काम करने के लिए तो उसको कितनी मुश्किल होती है एक प्रॉपर वे में सही काम करने के लिए। आप ये ऐश की बात कर रहे हैं, आप इतने लाखों फॉलोअर्स, फॉलोअर्स मैं कहती हूँ जो हमारे फाउंडर्स हैं, हम जो ऐश को देख रहे थे, हम फॉलो कर रहे थे, हम कह रहे थे ये हमारे सीईओ हैं कंपनी के,
और हम कह रहे थे कि ये हमारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो हम यही कह रहे थे ना कि ये हमारे लिए करेंगे। हम इनके लिए क्या करेंगे, हम ये नहीं कह रहे थे। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम उनकी जो बात है उसको कन्वे सही कर दें। हमारे लिए सिर्फ़ यही अभी हमारे लिए यही एक काम है कि हम उनकी बात को सही कन्वे कर दें। बजाय ये कि हम ये काउंट करें कि उन्होंने अभी ये नहीं किया, अभी वो नहीं किया। और देखिए, जो नहीं कर रहे हैं और जो लेके भाग गए, उनके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। और जो कर रहे हैं और कितना करेंगे उनके उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते कि हम उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दें कि जल्दी से हमें कंपनी ऑन पैसिव शुरू हो जाए और हमें पैसे मिलने शुरू हो जाए। हम इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेट इट बी। हम सर ऐश को वो करने दें जो वो कर रहे हैं। हमें सिर्फ इस चीज़ का बिलीव होना चाहिए कि वो सही कर रहे हैं, और जी, हमने जी। अब तक यही बिलीव रखा है। इसी वजह से हम उनको अब देख रहे हैं और हम इतने खुश हुए सब लोग उनकी बातें सुन के, और ये सुन के, और ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी हर बात को बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हमें बयान किया है। हमें बताया है कि वो किस-किस मुश्किल से गुज़रे हैं। और अभी जो ये फर्दन-फर्दन एक-एक चीज़ सर वसीम ने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताई है, इसमें अभी हमारी काफ़ी मेहनत है कि हम उस वेबिनार को बहुत गौर से सुनते हैं, उसके अलावा उसके सपोर्टिव चीज़ें भी देखते हैं। जैसे अगर सर गुरस्विंदर ने कुछ कहा है, मार्टी ने हुँ, कुछ कहा है, रेड ने कुछ कहा है, तो हम उन सब चीज़ों को लेके चलते हैं और आपको अपने सेशन में, हम अपने यूट्यूब के इस सेशन में ये नहीं देखते कि 1 घंटा हो गया या 2 घंटा या 15 मिनट हो गए। हम ये हुँ। देखते हैं कि हम उस चीज़ को पूरा आप तक पहुँचा दें और जी, आपको बिल्कुल। इस बात का क्लैरिफ़ाई हो जाए, उसके बाद कोई क्वेश्चन्स आए ही ना कि आपको ये सवाल कुछ करना पड़े कि ये क्यों नहीं हुँ। हुआ था या इसकी क्या वजह थी। जी, तो आई बिल्कुल, थिंक बिल्कुल। बहुत कुछ क्लियर हो गया है हुँ। सर वसीम वो के साथ। उन्होंने एक बात की थी जो कि उन्होंने कहा जी, कि मैं डेली लाइफ़ में क्या होता है कि चीज़ें जब वो कर रहे होते हैं तो कि कुछ सुराख होते हैं जिनको मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ, बनाने का तरीका सोचता हूँ। फिर मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बीच में कॉम्प्लिकेशन आती है, जैसे ऑपरेशनल ड्रामा होता है, एससीसी का हो गया, लोकेशंस का हो गया, चैलेंजेस आए, अगर ये काम ना करे तो कुछ और काम करना पड़ेगा। उन्होंने इस सेंस में बात करी। तो अल्टरनेट सॉल्यूशन हो जब तक वो नहीं बन जाता, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने कहा सही। मुझे तब्दील करना पड़ा, उन्होंने बात की और अपनी फिर उन्होंने कहा कि 2024 एक अच्छा साल था, जहाँ हमने मेहनत की। फिर उन्होंने कहा एक नया का बिज़नेस आइडिया जिसका नाम डिफरेंट हो सकता है, उन्होंने ये बात भी की, ऑनफियन हो सकता है या कि देखिए इसके बारे में डिटेल हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं थोड़ा-सा दिलन सर ने जो बताया है, मैं थोड़ा-सा इन शॉर्ट बताना चाहूँगा, उन्होंने क्या कहा है, उसकी देखिए वो अगर ओपनली एक प्लेटफ़ॉर्म में आकर बात कर रहे हैं, उनका ज़रूर कोई डिस्कशन हुई होगी, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट ऐज से बात है। वो जब उन्होंने ये बात कही है कि ये चीज़ें मुझसे डिस्कस हुई थी लेकिन हमने मना किया गया था, लेकिन अब ऐज सर ने खुद ही बात कर दी तो मैं ये कर रहा हूँ। हुँ, उन्होंने एक स्टेप आगे बात कर दी। उन्होंने कहा एक तो बात तो ये की कि एक तो जो पेंडिंग कमीशन सबको मिलने वाला है, ठीक है? और उसमें प्रोसेस में, ठीक है? जब ऑन पैसिव लाइव होगी ना, लॉन्च होगी तब ये चीज़ें होंगी, ठीक है? एक बात तो ये है। फिर दूसरी बात है हर हफ्ते नेक्स्ट वीक वेबिनार्स होंगे, उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने एक और बात की कि ऑन पैसिव के हवाले से उन्होंने ये बात की है 100% सब कुछ चेंज हो गया। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ मतलब थोड़ी मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि जो भी चीज़ पीछे जो जो बताया गया था और अब इस प्लान के तहत चलेंगे या ये वो चीज़ रह गई थी उसको आप कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो सही एक डिफरेंट एक नया रोड मैप खुद बताएँगे कि जी, अब जी। क्या करने वाले हैं या अब क्या होने वाला है। तो वो चीज़ें आप बिल्कुल इसीलिए आप छोड़ इसीलिए दीजिए। हम इसीलिए हम पुरानी कोई भी प्रोडक्ट ओ कनेक्ट ओ मेल उसकी कोई बात नहीं, नहीं करते। इसके लिए कि अब हर चीज़ नहीं हो पता नहीं क्या होगा, ठीक है? फिर उन्होंने कहा कि उनका कमीशन स्ट्रक्चर भी चेंज होगा जो नया प्लान है, ठीक है? और नया बिज़नेस उनका ऑलरेडी ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ठीक है? किस नाम से आएगा? ऑन 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 पर सीधे ही उन्होंने कहा आने वाले दिनों में पहले नया बिज़नेस प्लान आएगा, इसके थोड़े दिनों बाद कुछ अरसे बाद ऑन पैसिव आएगी फिर। उन्होंने कहा ऑन पैसिव के साथ चीज़ें मर्ज होंगी, जो भी इनका होगा तो ये उन्होंने कहा बात की। फिर उन्होंने कहा ये चीज़ें इसलिए भी की गई कि पिछले 2-4 सालों में एआई में काफ़ी चेंजिंग आई है। हम खुद देखते हैं कि अभी कितनी चीज़ें आई हैं, चैट जीपीटी आई, काफ़ी कुछ हुआ। तो उस चीज़ में अगर उन्होंने कोई प्लान पहले अनाउंस किया तो वो उसमें स्टक नहीं होना चाहते।
क्योंकि चीज़ें चेंज होगी ना, अगर वो चीज़ें लॉन्च हो जाती वक़्त पर लॉन्च ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं चीज़ें, उससे आगे चीज़ें आ जाती हैं। फिर उन्होंने एक और बात की थी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा ये कब तक होगा? मैंने कहा 2 3 से 4 हफ़्ते लग सकते हैं, 60 दिन भी लग सकते हैं। उन्होंने कहा मैं टाइम नहीं बता रहा, 60 दिन उन्होंने ज़्यादा ही बताया करके, क्योंकि 1 महीना तो 3 से 4 हफ़्ते ये है कि होगा, तो ये 60 हफ़्ते। फिर उन्होंने एक बात की थी कि बाकी वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, देखिए ये न्यू बिज़नेस के वाले से एक बात थी, आई थिंक उस पर हमने ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना कि भई क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, हमारी बेहतरी के लिए होगा। तो हमें ज़रा फ़ोकस करना है बस कि हमारा जो असल में हम हमारी मेजॉरिटी जो लोगों की है ना, हमें सिर्फ़ ये पता चले पैसा कब आएगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जानते हैं, ये एक आईटी कंपनी है, जो एक प्रोसेस से गुज़रती है। ये नहीं होता आपने सोच लिया तो चीज़ें आ गई। ये प्रोसेस हो जाता अगर पीछे अगर चीज़ें ना हुई होती हैपन, और उनका उन्होंने डिटेल से बताया, आई थिंक जितनी डिटेल से उन्होंने बताया कि किस लोगों ने क्या-क्या किया, इसके बाद तो लोगों के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ठीक है? लोगों का यही क्वेश्चन थे ना, हमें हमें बताएँ, क्लियर करें। अब तो क्लि चीज़ें भी क्लियर कर दी। जी, बिल्कुल। बस इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉज़िटिव रहें बिल्कुल, और आई थिंक इसके अलावा कोई और हमारे पास हमारा काम यही है जो अभी तक है। अगर किसी के पास कोई और काम है, तो आप बताएँ कि हम क्या कर सकते हैं? आई जी, डोंट थिंक सो। आई थिंक कि हमारे पास अभी सबसे अच्छा काम यही है कि हम बिलीव करें जो सरैश कह रहे हैं, और वो सही कह रहे हैं, इस बात को भी समझें। ये नहीं कि बस जो कह रहे हैं उस पे बिलीव करें। ये भी देखें देखें। कि उसको असेस करें कि क्या कह रहे हैं, और वाक़ई वो सब चीज़ें फ़िगर आउट करके देखें। जैसे क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते कि वो उन्होंने बोला और हम कहें कि हाँ, हाँ, सही बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं जी, कि अब तक क्या हुआ और वो क्या बोल रहे हैं, और जो-जो पीछे गुज़रा है, तो उसको कनेक्ट करें तो कि वाक़ई ये चीज़ हुई है, और नहीं, ये बंदा जो सामने है वो सही कह रहा है। जी, तो बिल्कुल इससे ऐसे। पता चलता है कि उनकी रियलिटी है, वो सही कह रहे हैं, सच्चाई है उनकी बातों में। और मेरे जी, ख़्याल से इसके अलावा हमें जो है इससे अच्छा कोई काम हम नहीं है अभी जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है। बस मैं सर अभी मैं सर ये क्लोज़ करते मैडम हैं। रोज़ हैं जो हमारे साथ थी मेरे ख़्याल से, अभी तो आई डोंट नो इफ शी इज़ हियर, बट मैडम रोज़ आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू। आपके जो अल्फाज़ हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, यू आर वेरी मच सपोर्टिव, एंड बिकॉज़ ऑफ योर वर्ड्स एंड व्हाटएवर यू आर सेइंग अबाउट अस, this keeps us going, so thank you for your kind words. Yes. बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। आज का Yes. सेशन हमने आई थिंक कुछ डिटेल से ही बता दिया। यस, काफ़ी। अच्छा अच्छा, अभी एक्चुअली इसमें वेबिनार तो 4 घंटे का था, ठीक है? लेकिन वो वेबिनार के कुछ पॉइंट पे सर ने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जैसे हमने यहाँ पर शेयर की। इसके लिए वेबिनार का देखना बहुत ज़रूरी था, जो हमने ए टू ज़ी सारा फॉलो किया, और आई थिंक नेक्स्ट वीक हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये वेबिनार का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने का, और थैंक यू वेरी मच मार्टी डिगामो सर, कॉलिन मन्ना सर, यू नो कम्फर्ट मैम भी आई थी, कम्फर्ट में यस, बट यस, या आई मिस्ड हर, मुझे पता है वो आई थी, और आई वाज़ अ लिटिल बट थोड़ा देर बाद में शी कुडन्ट टॉक, आई थिंक या तो कोई इश्यू होगा या उन्हें जल्दी होगी या कुछ चली गई, ओह! अच्छा, अच्छा। तो शी कुडन्ट टॉक। तो वो आई थी, कोलिन मन्ना ने सर ने इनवाइट किया था, मार्टी को भी, उनको भी, और बाकी है कि रेड फन आ गए, देखें। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दे विल कम, और आई थिंक ये हाँ उनकी जी, बिल्कुल, ये हमारे हमारे वेबिनार में कभी भी हमने ये चीज़ सही बात ये है कि हमें उम्मीद नहीं होती कि ये आएगा, ये हमें कोई मतलब ये हमने किसी को इनवाइट नहीं किया हुआ होता, और ये मैं कहती हूँ हम प्राउड फील करते हैं इस बात पे कि लोग हमारे वेबिनार में आते हैं, और एक नहीं उसके बाद वो दूसरों को भी इनवाइट कर लेते हैं। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस always, and we always have a lot of respect for these people who come to our webinar, because ये हमारे
They are those people, we look up to them. They have a lot of knowledge. We look up to them because of their knowledge. मैं उनके knowledge की वजह से हम लोग उनकी बात सुनते हैं और इसीलिए उनको respect देते हैं. तो the main thing is knowledge, right, right news, whatever is coming from the company. तो ये सब चीज़ें हमें उनसे मिलती हैं, इसलिए हम we respect them a lot. तो यही बात है. तो जी सर, मेरे ख्याल से अब इसको रैप अप करें. जी काफी जी देर हो गई, जी लोगों जी ने हमारे जी पास. जी जी ये लास्ट मैसेज है रोज मैम का, पढ़ लें उसके बाद फिर हम करते हैं स्क्रीन पर. यस यस, रोज मैम, या thank एंजॉय you, thank you टू यू to ऑल. the Indian community, the Pakistani community, Bangladeshi community, यस Nepal, यू आर ऑल. you, यस yes, and all around the world, the people around यस. the world, whoever are here, our friends, and those people who support us. Thank you very much. और एक अच्छी बात थी जो आर्टिसन ने जो पॉजिटिव बात की तारीफ की पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में, मेरे बारे में. तो हालांकि हम इतने पैनल में भी नहीं जाते, ना हम किसी पैनल में जाने की डिमांड करते हैं, बट ये उनकी मोहब्बत है. आज रेड फन जी से हमें हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी तारीफ़ी कलमात किए, तो ये ऑनर की बात है हमारे लिए. जी, बिल्कुल बिल्कुल. चलिए ठीक है, इसको क्लोज करते हैं. नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होती है. थैंक यू वेरी मच, आप सबके लोगों को ओके भी जी, शुक्रिया. थैंक यू. अल्लाह थैंक यू हाफिज़. वेरी मच. अल्लाह हाफिज.